हाँ माइक म्यूटेड था। चलो मैच जाते हैं या थोड़ा रुकते हैं? हेलो अपार, हेलो एवरीवन, मैच स्टार्टेड ऑलरेडी। यस यस भाई, मैं थोड़ा लेट हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। हेलो ध्रुवल, पुष्पक भाई, हेलो। वेट मैं चैट बताता हूँ। माइक आ रहा है ना अभी? व्हाट्स अप वियर्ड साहिल, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो, वेलकम। बहुत टाइम बाद। चलो जाते हैं डायरेक्ट मैच पे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया, प्रैक्टिस चल रहा था एक्चुअली, उसके बाद जल्दी से फ्रेश हो गया। तो मैच तो चल रहा है अपना, टेक का ऑलरेडी चालू हो गया। कमॉन कमॉन कमॉन। एक सेकेंड, कैम कर देता हूँ। इधर कर दो, इधर कर दो। चलो बॉयज। ओहो 3-3। एक्शन पीएच वैसे ऑल्टर ईगो। देखते हैं साथ में था दोस्तों। कुछ भी क्वेश्चंस रहेगा तो जरूर पूछना, क्वेश्चन आंसर करूंगा। नेम और लोगो भी कर दूं। ये ले, ये ले। चलो, ए डिफेंड कर रही है और ये लोग अटैक कर रहे हैं। डिफॉल्ट 2-1-2। नाइस, 2-1-2 डिफॉल्ट चल रहा है। कैमरा एंगल सही है बॉयज, या थोड़ा सा नीचे कर दूं? भी सही है ना भाई। मजे करेंगे गाइस, सब लेके अपने अपने चीजें। भाई कब देगा बैटल पास? बैटल पास चाहिए, करता हूँ थोड़ा गेम साउंड बढ़ाओ। ए कांटेक्ट, नाइस। ओ माय गॉड, अवेयरनेस। Reunited with YB, how are you feeling auntie? Good bro, very good. मेरे को बहुत टाइम से मन था उसको वैलोरेंट में लेके आने का, फाइनली वो हुआ एंड आई एम हैप्पी। गेम का साउंड नहीं आ रहा है। He has to always be in that general vicinity. I bear in mind, this is only 5 rounds in, but अभी we've आएगा। already seen Kush build up that बहुत टाइम dependency बाद ना ये सब and कर रहा build हूँ। up that kind of अभी आएगा, अभी Pavlovian आएगा। presence. गेम साउंड आएगा ब्रो, गेम साउंड आएगा। That Pavlovian orb goes down behind Jordan. You can see that they turn away. It's kind of interesting that you turn away चलो, with the orb, full analyst with the mode। orb there, rather than hold the angle. Which 2-1-2 नहीं, 1-2-2 डिफॉल्ट। अभी वो लोग थोड़ा चेंज किए, मिड पे कुछ कर रहे हो लोग। The height मिड isn't good कंट्रोल। enough to avoid the detection Guys, of the boom bomb. ये Nats बोल के जो player है ना, very good player। Grenade though. अच्छा फाइट खेलता है। Oh, the second they take the Lord. swing, they had to vaguely adjust their aim to go from dog to player. And that meant that Kush had a slight advantage when it came to the crosshair placement, and they used that to maximum advantage. मैप कंट्रोल से ले रहे अपने डिफॉल्ट वर्किंग डिफॉल्ट Now, चालू it was the same है। must be very difficult for Action PH. Luckily, the Cypher is you doing can good. escape.
But there is a big problem now for Action PH where they're a man down. अब ये They लोग don't fallback know कर रहे where हैं, else इनको लग to रहा go है B looking hit to होगा आराम attack. से. And more importantly, Viper they still fake करेगा don't ये have पे any और ults B hit. other than that Cosmic Divide, which Ayu's held onto for quite a while now. Waiting for Sky to Cosmic join. Divide's probably going to get a little bit more value on the attack, but on the तेरा demo defense, देखा next. Cypher Camp here is going to give away some empty angles. And now Pathway देखो damage दोस्तों. coming on through Del B. They've softened up RU. And there we go. There's a ping. They might be able to be... They don't actually break out through the wood. I think Del B probably could have made that a little bit more Nice safe. one, Hey, nice who am I to question Del B when he's Pathway trying देखो out guys. like this, Kremer? Push on the lurk here. Should be able to get one on Medeski. But hey, Del B's इसने not going to satchel give the करके choice. I'm on fire ये today, clear baby. किया. You're फिर absolutely दोनों right. मिलके 6 रैप to कर 3 दिए. and Action Cypher PH रैप कर now दिया are इसको और ये looking backside को मार very, दिया. very Good, very good. shaken. It's a अब यार second time economical हो. loop that we see a lot of teams, it's a pitfall a lot of teams fall into, particularly defenders, because they need every ounce of utility they can get. I didn't tell you, but And Yakit, because I of that, remembered you. end I up was in this talking to him. He position told me that where he you go finished for you full in buy, Dream doesn't Yes, work, yes. down to an eco. Like, Lose the eco, go to the full buy. मेरा that भी doesn't अभी work तो as बात नहीं well, होता, but मेरा and बहुत बात होता with था every उससे. other फिर round World Edit being से a उन लोग sheriff से बहुत बात fight, होता it's था almost as if Instagram for पे. Alter Ego, अभी तो every round they win बहुत बात counts नहीं as हुआ, double. बहुत टाइम हो गया. TM और T1 और DMB वॉच पार्टी कर रहा है, उनके साथ डिस्कॉर्ड पे जाओ. जाता हूँ ना, पहला मैप थोड़ा शांति में देखने दो, थोड़ा एनालिस्ट करने दो. सेकंड मैप से करेंगे बकचोदी उसमें क्या. You're doing pretty well, guys. स्ट्रीम ऑडियो पूरा कम करो एडिटर. Outdueling the Astra. I ये think तुम that लोग ऑडियो बढ़ाने बोल the रहे हो. Omen gives a couple of options. अरे यार बड़ा बनना अभी. I think the Astra definitely going to be. सर लव फ्रॉम सिक्किम. कभी सिक्किम आओ. आई हैव बीन टेलिंग दिस टू यू पास. तुषार ब्रो, मैं सिक्किम मेरे को बहुत पसंद है. लाइक बट टाइम ही नहीं मिलता यार उतना प्लान करके जाने का. अभी कितने सारे टूर्नामेंट्स है. अभी 10 दिन का ब्रेक है. जा रहे हैं वापस घर पे, तो ब्रेक में ऑफ कोर्स फैमिली के साथ ही, दोस्तों के साथ ही मिलने जाता हूँ. They've become very good very quickly, and a lot of that is actually accredited to their coach. माइक ऑडियो थोड़ा वियर्ड है. This has been, he's been really hyped up by both the community and by the players of Alter Ego as being kind of this encyclopedia of Valorant knowledge. And well, it seems to be working out, Harry. They're in the finals. They're 6 up on the opening map. अभी माइक सही है. घाई घाई में आ गया रे, जल्दी जल्दी. Got to highlight as well that as an organization. क्या कर रहे हैं लोग? डिफॉल्ट, मिड डिफॉल्ट, फास्ट टेक. रोप का फास्ट टेक. What's happened recently in SEA local tournaments? Alter Ego had been languishing for a couple of months. Yeah. Oh, Cypher spotted. Aye. They bring up the किस्मत. cage to try and avoid the fire from Emon. And look at this, Georgie. Oh, that's a couple misses. Oh, It's not no, been a great Georgie. game for Georgie so far. However, Shot. LB's going to be One more. And that means Medeski's ready for a one tap. Now, as you make the crossing, will you be able to deal with Georgie? It's a safe crossing here from Julio Leo. Out come the Seekers. Will reveal the position of Georgie over here in screens. However, it's a couple of misses, uncharacteristic. Caught reloading, and they penetrate into the smoke. But it's going to be Adrian King who's penetrating skulls with the bullets from a Phantom. Are you now? Little to play with unless he can go absolutely mad. हाँ, वेबकैम का चल रहा था मैं. Now much better. Yes. An attempt to try and maybe grab it again here from Iman. अरे ये बाजू वाले को आज ही ड्रिल करना है क्या? That was absolutely unwinnable. You see that paranoia? What's up, Obi? Welcome to the stream. Thank you so much, Obi. मेरे को opportunity देने के लिए live watch party का. Welcome to the stream, bro. Double swing from 2 angles. There is no way on God's green. Rafael rage करता है क्या अभी भी? नहीं. Yeah, man. However, it's a very, very clean round from Alter Ego. Yes, they lose 2 players, but they recover it. We now see the investment of Mike थोड़ा weird है. हाँ, Mike थोड़ा weird है. कर दिया भाई. Comes out on Georgie. No jet in A. यही है ना bro. Split जैसे मैप में, छोटे-छोटे मैप में कोई मतलब रेस जो duelist है वो ज़्यादा impact लाता है in terms of utility. Georgie, but admittedly, this is not the ideal map for a jet. We're hoping that Georgie may be storing up some energy here for the later match. Antida, please 22 में EG का domination not only India but also Asia में चाहिए. कोशिश करेंगे WhatsApp dude भाई. कोशिश करेंगे. वही तो इसके लिए तो इतने सारे sacrifices कर रहे हैं. घर सब कुछ छोड़ के सब इधर अपने कंफर्ट जोन छोड़ के सब साथ में बैठे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं. तो देखते हैं कैसा जाता है. होपफुली सब अच्छा ही जाएगा अगर ऑनेस्ट और मेहनत करेंगे तो. ऑनेस्टी दिखाएंगे. ओह भाई ये लोग 2-1-2 में कंट्रोल ले रहे हैं. कितना अच्छा. The op at least has not been revealed yet as far as I've heard. So Kush on the second pass here might get caught out. But they can always just wait to bring this wall back up and give themselves some additional safety.
बहुत अच्छा खेल रहे लाइक उन लोग ने एक पीक लिया इधर और इधर टाइम वेस्ट नहीं किया कोई दूसरा टीम रहता तो इधर वो एक और पीक वाइपर को डायरेक्ट छोड़ के वो लोग डायरेक्ट बी पे आ गए रे अभी मिड पे वाइपर इधर कुछ करेगा स्मोक आया अभी वो लोग नाइस ये रहता है टाइमिंग नो नीड टू गो बी 15 सेकंड है जाना ही पड़ेगा All right, Adrian King very low here. They need to be very careful as they move on through. Medeski can't get more than one. They just finish off the battered, bruised, and tenderized Cypher. And while timing might have been an issue here, the spike will still be planted in Georgie. Well, they're given a tactical pause. अपन चिल करेंगे बगल वाले ड्रिल करेंगे माँ कसम सच रे I quite like बीटी है हम लोग ये I would quite जो ड्रिलिंग साउंड तुम लोग को आ रहा है कि नहीं मालूम हम लोग को सुबह 8 बजे से चालू होता है और हम लोग पास्ट 1 महीना हो गया नेबर्स कर रहे हम लोग एनिग्मा मैनेजमेंट बोल रहे हैं बट क्या करें वो लोग बोल रहे हैं हम लोग के घर में हम खुद करेंगे क्या फायदा Splits isn't really an attacker-sided map. Oh my god, look who is live after decade. It's actually fairly Big fan, Vibor. Oh my god. And welcome Vibor. Split, particularly ये हाँ एड्रियन किंग है रे हीरो प्रेस्टन North America. Is you see the way that it's way that your defenders side play it, they always play it like is that Karan from Tech? I've heard he does everything in Tech for Valo. He's a legend, bro. Territory means that those aforementioned chokeholds just get worse Huh? for Alter Ego. However, that's not happening. Action PH, they're allowing Alter Ego He's a legend, to right? get this control, to get their Bro, Enigma is positions, too get OP their now. teeth Before it sunk was not into that mid, good. Get their lurkers embedded on A and B, Not gonna lie. and it means that when the execution does come, It's you nothing can't like have that, bro. reinforcements ऐसा come नहीं because है. they're सब dealt टीम with- का they're dealt with the lurker. You either have to सब hope टीम that का you एक win एक on अच्छा ult टाइम और management, बुरा टाइम but रहता even है then, बट हाँ मेहनत कर रहे हैं when they are dropping ults, होपफुली they ऑल have to be रिजल्ट्स forced अच्छे आने out. चाहिए थे On topic of ult लास्ट management, कपल ऑफ though, टूर्नामेंट्स if you have उतना an अच्छा advantage रिजल्ट्स here, नहीं आया if showstoppers are available, we still haven't seen that वीरेन भाई you still has to use this. Sentinel up versus Sentinel up, baby, and Tesseract. Oh, look at this. Already. The Viper split has been established on A. Kush has ran ये the बंद करना gauntlet, and Iman had no idea. They heard the movement, but they could not stop it. They will maintain their position here, though, hoping that someone else would try and test this without the wall up. That's an easy clap. In comes the showstopper. Oy, Not baap re. send it towards the Viper's pit. 8 for Because half. They prefer to take down Adrian King instead. Unless Silver Spike Kush is kuch not being karta hai. delivered here, but Kush needs to make some clearance here. And इसको Iman मालूम could है. expect a little bit of penetration out of this. They're cornered at the moment. It's going to be so difficult to make their way out of this area. there. But Nice Kush round. tests them. And if you test him on, he's going to get full marks. OG anti is back. Now it's 1 versus 5. Julio gets guy the कहाँ first, था? makes the teleport noise as Iman's going to send out that nade. They were tricked by the teleport. They thought they'd made a little आकाश bit of बोस deeper एंटी द कैमरा penetration, want to but see they Indian teams actually dominate did. ACA region but Now হচ্ছেই না Julio finds themselves in the cubby. হবে They're হবে still bro gonna have to deal with a lockdown. soon ओ ये राउंड घूम गया क्या नहीं 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 Not the 1 versus 5. एंटी पीक शीश Absolutely शीश not, मेरा पीक है वो Oh, Harry. सब कुछ मेरा पीक Even है in the rounds that Alter Ego lose, it looks like they win, right? That was an insane round from Julio. And here's the thing, he wins every single one of those kills with something No bro, it's like that the first one's a old low, Enigma the was second not one's a able to fake give teleport, fight also third to one's a G and well-placed VLT, smoke. but Like, now that they is can just win a also. Smart player, Maybe. unrivaled in that regard. Luckily, is the only Omen in the game as well. It's Big fan bhai, thank you Ayan bhai. on split. Welcome to the It's quite stream, bro. unorthodox, really. So a lot of the time, Yeah, देखते हैं पिछले राउंड क्या करते हैं लोग 20. yeah, exactly. Yes, that's almost 2 years. That's weird to say. It's almost 2 years ago now, Harry. I don't like it. But Don't like that. no, that's a reality check. 1-3-1 mid take defensive side, 8-4 in the lead. Same चीज ये लोग हम लोग के साथ भी कर रहे थे already को However, Breaker PH that very same pistol round. जंप स्पॉट करेगा ये वाइपर ऑलवेज जंप स्पॉट करेगा रोप से और ये जो रेस है ये इधर से ही खेलेगा ऑलवेज और ओमेन उनका बी खेलता है और साइफर उन लोगों का डिफॉल्ट पिस्टल है और अल्टर ईगो का तुम लोग देखोगे अल्टर ईगो जो पिस्टल खेल रही है यही पूरे टाइम खेलेगी अनलेस वो लोग कुछ चेंज किया है तो Double duelists, but they're going to be going in pretty much blind. one way you are doing one way my Absolutely friend right. Tesseract looking to garner a bit of control into B main, and it's भाई एक shout out साहिल दुबे shout out to you भाई like this. He has a paranoia ready
So there is that. And I'll be in Mumbai in Feb. You don't take me to House of Lords तो अरे चलते ना उसमें क्या है bar just a single player EG का एजेंट कॉम हर बार सेम क्यों होता है प्लेयर्स वर्सेटाइल तो है कुछ करते ब्रो एजेंट कॉम से पहले बहुत कुछ चीजें ठीक करना है पहले उस पे ध्यान देते हैं फिर एजेंट कॉम में जाते हैं स्टेप बाय स्टेप बिग फैन भाई थैंक यू सो मच इंडियन टीम्स में पेशेंस की कमी है एज कंपेयर टू एसीए बोल सकते हो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम क्लासिक ओपी है रे पिस्टल हार गए Alter ego. That was supposed to be a one and done flub. That was supposed to be over Georgie here. भाई मुझे मैं सुनने में आया Alter ego बहुत बड़ा और गया in terms of mobile sports. उनका मोबाइल लेजेंड्स या PUBG टीम भी बहुत अच्छा है. And then EXO also disbanding, no idea भाई. ये सब सवाल मेरे से मत पूछो. मेरे को ये सब का आइडिया नहीं रहता है. Bro, you are the only team who beat one ACA team in this tournament. Bro, that was we should have won against Alter Ego as well. अगर कभी टाइम हुआ और मैं अगर स्ट्रीम करने बैठूं वो मैप समझेगा कितना क्लोज लाइक स्कोर लाइन दिखेगा तो वैसा नहीं समझेगा बट वो राउंड्स कितना क्लोज राउंड्स आ रहे हैं हम लोग एंड इधर चेंबर खेलोगे देखते भाई क्या आता है एंड इधर ब्रोंज आयरन हाथ स्टक थे कि फिर वो किक और कस्टम में गोल्ड कैरी कॉम्पी हाँ भाई मैं रैंक ही नहीं खेलता मेरे से रैंक का बारे में पूछो ही मत That's all right, Harry. Well, welcome to the series, mate. Hope you do. Thought on Hikka played the race. He's a race main only. I think उसके पास race का बहुत ज़्यादा knowledge है. The rest of it's a good thing for us to have him. To be here. They could try and swarm Tesseract, and they might be able to get the Spectre. Unfortunately, Tesseract he just happens to be pretty good. वो भी तो सिर्फ एंटी की क्लासिक है राइट ने नर्फ कर दिया नहीं कैसे नहीं करे भाई क्या बोलने का जाने तो क्लासिक ओपी है रे पहले मैंने जंप स्पॉट करना चालू किया राइट ने ऑप लेके जंप पीक राइट ने जंप पीक बंद कर दिया जेट को नर्फ कर दिया क्लासिक नर्फ कर दिया सब कर दिया रे Iman and Georgie, okay, maybe a little bit better suited for the attack. And according to you, currently, what is the thing Indian teams are lacking against ACA teams? We've got a game on our hands. I think Action PH, they're now going to be going against the full buy of Alter Ego. Understanding, game understanding, all of तो that, of course lack करते हैं. Also mentality, क्योंकि वो लोग बहुत confident है अपने fights पे और काफी सारे हम लोग बहुत सारे Indian teams जो fights पे confident नहीं है और गलत fight ले लेते हैं. मतलब वही है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम थोड़ा वीक है एसीए टीम के साथ बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों तुम लोग देख ही सकते हो कि मे बी लाइक कोई इंडियन टीम फाइनल नहीं खेल रही है बट लाइक वी आर देयर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट डिफरेंस है आई विल बी ऑनेस्ट ब्रो योर व्यूज ऑन पीपल गिविंग हेट टू कप्पा क्या करना है भाई मैंने लोग ऐसे ही है कुछ इस पे कुछ कमेंट नहीं करना है The rest of Action PH are just turning their attention back to mid where they're going to be trying to engage with Kush who he's had a pretty good game for Vipers really. Kush can report that there's going to be presence here now. They actually bring up their own smoke hoping to try and cut off this aggression before it can begin. Revealed by the boom button, yes, it's going to be yet another crossing here from Action PH. Bro, why ऐसे teams don't you do two duelists like South to East? सबका सब region का अलग-अलग play style है. तुम कोरिया में जाके थोड़ी बोलोगे कि क्यों वो लोग breach use करते हैं सब मैच में. सबका अलग-अलग play style है. एसीए का, एसए का, नॉर्थ अमेरिका का, यूरोप का. ओह देखा? Viper and not to be broken down. Raze. Would have been Adrian King who would have been responsible for that, but Julio just wants to head them off instead. This is a very important round for Alter Ego. They don't want to be taking any risks when it comes to this economy. Time's going to make a fool of them if they don't move soon. They'll refresh smoke here. Julio's on the other side. Clean. 9-6. I'll send you to a fresh one. That's some really and like an Enigma Gaming defeat Paper Rex.
two kind of To be honest, ragtag right now they are better sets than of us. assassins But work in complete unison there. क्या Both मालूम? In Delby future, of and course. Kush and Like वो तो Julio, goal they है, of course, joined to be with one of the Kush best in again. Asia. They just spray into that smoke and they As I cut said, anyone off you at the pass. were Anyone number even one player in dared India to in do that our smoke interview in takes January. How you rank hailfire yourself of in your bullets. team now? I am Actually, the PhD, you need I'm to remember, the that was I'm their the fifth bonus. guy in They the now team. move to their full buy. I rank but myself the this lowest. full buy is hurting their economy. They're down to 0 on almost everyone bar Badesky. पर अभी तो एंटी की शेरिफ एंड ऑफ भी अच्छी चल रही है, परफेक्ट टू द चेंबर में. देखते हैं भाई, ऑफ तो चलेगी भाई, ऑफ का कुछ सीन नहीं है. ऑफ तो 2 साल बाद भी दोगे तो भी चलेगी, उसका कुछ सीन नहीं है. इतना ऑफ कर लिया, इतना सब कुछ जान लिया तो इट्स लाइक, हाँ मैकेनिक्स का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि फ्लिक्स या फ्लिक्स वगैरह थोड़ा वो हो सकता है, बट पोजीशनिंग और एंगल मार्किंग रीपोजीशनिंग में तो मैं खा जाऊंगा. ओह माय गॉड, हिक्का, ये देखो वनाबी मेरे पीछे बैठा है, इधर आके बिग फैन सर लिखता है. गाइस उसको सब्सक्राइब कर दो जाके 2-3. And Delb can now just think of a side. They don't have much health to work with here. Do you think you can beat SKRC operator now versus in your prime? भाई प्राइम का तो पता नहीं, प्राइम का तो मैचेस जाके देख लो पीछे जाके किसको क्या बीट करना है. बट अभी का अप्रोच थोड़ा अलग है. To beat good oppers, I have something in mind. तो वो सब ट्राई करना है in the new year. Because इंडिया में क्या सीन है, इंडिया में people don't know how to punish jet players. Because if you see maps like क्या बोलते हैं, split, ठीक है, bind, I don't think jet के बिना भी वो मैप खेला जा सकता है. But again, अगर मैं वो ट्राई करूंगा या कोई भी टीम ट्राई करेगा, सामने वाले जेट अगर 20-30 मार देगा तो उसमें वो माइंडफक हो जाता है कि यार जेट को क्यों पनिश नहीं कर सकते. Why jet is always overfragging. So उसके लिए कुछ सोचा हो नेक्स्ट ईयर से थोड़ा ट्राई करना है. अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा नहीं मालूम, बट ट्राई करना है. I think Chamber really fits your job profile and the role in the team as of now. What say? Let's see bro. मेरे टीम में मैं तो इनिशिएटर नहीं खेलता, मैं कंट्रोलर खेलता हूँ. तो चेंबर आऊंगा तो बहुत शिफ्ट करना पड़ेगा, वो सब तो बहुत प्रोज एंड कॉन्स है. देखते हैं क्या होता है, अभी तक कुछ प्लान नहीं है. मेरी टीम में जो इनिशिएटर खेलता है वो रेक्सी है, तो देखते हैं. And yeah, Rafael is just insane. Want to see him dominate more and more. Of course, bro. The pig as well. Oh, all that info now on Medeski. Anti-op OP. He must realize that the yachts aren't with him here. गेम में क्या चल रहा है थोड़ा कंसंट्रेट करने दो. ये मेरे को लगता है ऑल्टर ईगो का वो एक्स फैक्टर है रे. नेट्स, he's amazing with the cypher bro. बहुत आंड खाया हम लोग का. Well, it could have been the stars aligning for a double headshot there. Heron is simply faster. I can't believe they got a headshot here with the last bullet. हाँ sorry, Chamber is Sentinel. हाँ. A Chad. My bad. It's labored. Rafael can try Rena. This isn't pretty by any Rafael stretch को of the सब आता है. imagination. But I'll tell you Nats what, क्या Harry, मार रहा है? if you end it with that flare, no one cares about the fuse or the fireworks. When they go off, that's what matters. And I'll tell you what. Look at the score of Alter Ego. So the highlight as well. 12, 13, 13, खाली duelist 16 पे. There's only 4 kills separated their bottom and top fragger. Every single. ये देख same jump spot कर रहा है mid पे. Really needed Georgie to show up, and he just. इसके against एक breach लगाना है और एक jet लगाना है. Mid पे निकलो flash dash boom. Hey. ये play बनाया था सुमड़ी में. Georgie still marauding forwards. Delby gonna give themselves a cheeky spot on the outside of B here, but it's actually going to be Adrian good position. who might be the first one to catch this rotation. Yeah, this is experience, bro. This is experience. The rifle has been seen. Just take him in the hand. This is experience. Shot him in the wrist. He knows the timing.
ये इतना टाइम रोक छोड़ा है तो now they're making a prey over there. वो टाइम पे पुश करके मार दिया. This is not the squad you want for entries. Nice. The Killjoy. 2 more spotted. And the Astra. Coming in from the other side, Adrian King will reveal their presence. Out goes the Hawk and... Bocha dekh! You guys knew there was presence there. You heard it from the bird. That's a critical mistake from Nat. Uncharacteristic. And the spike might be a little bit labored in its journey here. And Julio, क्या नाम है इसका? Their own smoke to dissipate. That's one. That's tapped. Will Julio take the nice swing? round. They will. Was that an attempt to arrest there from? My chamber is best for you because you are one of the best topper. Did it Chamber can be replaced by Cypher on Breeze. We'll have a No, look. he doesn't. Bring up the scoreboard. Okay. Oh, okay. No. Well, it wasn't You can play Chamber in Icebox. What we are देखते भाई. I know. He starts waving his hands and you get scared. But while we're talking about ults, there is a lot available. ये Alter Ego को कुछ दिन पहले Paper X ने Icebox उसमें हराया. भाई सीन क्या है मालूम है क्या? All game. When you play against your own countrymen ना तो वो तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो. Like when we play against or when VLT is playing against G or G is playing VLT और अगर हम खेलते हैं उनमें तो हम लोग बहुत सोचने लगते हैं भाई हाँ हेलेफ ये प्ले बनाएगा हाँ एसके रॉसी ऐसा करेगा वैसा करेगा. बट व्हेन यू प्ले अगेंस्ट अदर टीम्स ना फॉर एग्जांपल अगर हम ऑल्टर ईगो के सामने खेल रहे थे या फॉलन 5 के सामने खेलते हैं तो हम लोग अपना ही खेलते हैं उतना सोचते नहीं है. तो ये एक मेंटालिटी आ जाता है. इट्स द सेम फॉर एसीए. अगर ऑल्टर ईगो बाप रे ये राउंड खत्म हो गया मैप. नहीं कुछ भैया डबल पिक. तो अगर वो ऑल्टर ईगो अगर फॉर एग्जांपल पेपर एक्स वगैरह से खेलते हैं सेम रीजन के तो उन लोग भी यू नो हाँ फॉर सेकंड ऐसा खेलेगा जिंग ऐसा आएगा वो ऐसा उतना ज्यादा सोचने लगते हैं. तो ये होता है हर रीजन में. If you तुमको क्यों लगता है कि ये जो बड़े-बड़े जो मेजर इवेंट्स इतने अच्छे क्यों होते हैं और एसीए टीम्स या ब्राजीलियन टीम्स इतना अच्छा क्यों खेलते हैं एनए टीम्स के अगेंस्ट? बिकॉज़ वो लोग फियरलेस खेलते हैं, फ्रीली खेलते हैं. पर अगर वो ब्राजीलियन फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन कल पेपर एक्स के साथ खेलेगा तो उन लोगों का गेम बहुत फाइट होगा, अच्छा गेम होगा. या तो पेपर एक्स जीतेगा या तो ब्रेन जीतेगा. पर ब्रेन उधर जाके कितना अच्छा परफॉर्म किया. तो जो इंटर रीजन को जब मैच खेलते हो ना तो वो उसमें होता है ओवर थिंकिंग यू नो नर्व्स इंटिमिडेट हो जाते प्लेयर्स. तो ये हर रीजन में होता है. कोच भैया बात कर रहे हैं. ये कोच बहुत यंग है, इसको खेलना चाहिए. ये कोच शांत एकदम कि गाइस हम लोग बहुत मार खा रहे, कुछ करना चाहिए. बिग फैन रॉफ्यूल, वेलकम टू द स्ट्रीम. वेलकम स्टार बॉय. ठंडा है क्या उधर? अरे बजाज भैया कुछ ठंडा ही नहीं है इधर. मैं तो 30 तारीख को कोलकाता आ रहा हूँ, पूरा बर्फ हो जाऊंगा जम के. एंडिदा आप लोग इतना इजी हरा दिए फॉलन 5 को बट जी हार गया उनके अगेंस्ट. होता है मे बी अ बैड डे फॉर जी बट आई वाज एक्सपेक्टिंग जी टू विन. एंड इधर ये फाइनल्स में अगर एक इंडियन टीम रहता तो मजा आ जाता यार. या तो हम नहीं तो जी नहीं तो और भी जो इंडियन टीम में से कोई पार्टिसिपेट किए तो इंडिया वैसे ऐसे हो जाता, मजा आ जाता. I think Bren is slightly better. You can't say. ऐसे भी टूर्नामेंट से जिधर Bren हार गया against their own countrymen. वो पापीचुलो का टीम कौन सा था? हाँ? SB से वो लोग 3-0 हारे थे Bren. मेरे को मालूम है. फाइनल्स. तो ये जो है ये होता ही है. वह भी कब आ रहा है? वह भी आ गया इंडिया में. उसका 7 दिन का क्वारंटीन है घर पे. उसके बाद बूट कैंप आएगा. And already maybe Alter Ego here are thinking about doing some exit frags, looking for some T1 calling damage. They are at least आता हूँ नेक्स्ट मैप आ जाता हूँ. Oh Emin, this win could be everything. कोई ना एंटीदा, अभी तो स्टार्ट है, धीरे-धीरे सब होगा भाई. Why not? It's risky to take this swing. South build, हाँ, SB South build. It's going to be for Action PH. Kush looks away. They saw them tuck in. Ooh, come on! I believe in the comeback. For a symphony of slaughter, and Action PH put another one on the board. देखते ये राउंड क्या करते हैं लोग. Building to a crescendo, Harry. I can feel it. DM calling, हाँ आऊँगा नेक्स्ट मैप आऊँगा.
The fact ये that map almost Tesseract खत्म ही isn't है. there by Kush is really surprising. That's a corner that he was going to clear. He then just changes his mind. T-Bone is analyzing. हो गया फिर तो. Bit of a questionable bit of decision making, but something to highlight though खत्म. is the fact that Tata, we see bye-bye. Rodrigo with no money whatsoever. There is a chance to turn this around. Not over yet, Harry. 4 rounds, not much. Nats, look at how brave they are. The size of a cojones on this cypher. They're just going to stand and deliver. Unfortunately, pain is going to be delivered prime style from Tesseract. Next day delivery, baby, free of charge. Guys, comeback हो रहा है. इन लोग ने weakness पकड़ लिया रे इनका ये. Because only Cypher plays from A side. बाकी कोई नहीं रहता है. तो अगर अच्छा entry path दिखाओगे तो Cypher वो one way cage करके क्या करेगा अगर पहला बंदा निकल जाता है अच्छे से. This is the one they've been playing for. You're absolutely right, Harry. And while they're playing for it, they are looking very, very scary. I'm starting to feel like if there's any chance for this side, if there's any chance particularly for Alter Ego, it needs to come soon. Because if we go to overtime, Action PH, they have that momentum. They have that confidence. And that'll take them straight over the line. That could be it all. And you got to remember, after 2 flawless rounds, that's really neutered the ultimate generation of Alter Ego as well. They've only been getting... अरे 5:30 the grand final match VLT Asteria Unitas Whiter against it. Oh my god, वो भी अच्छा है, but उसमें rights नहीं है मेरे पास. Watch party कर सकते कि नहीं मालूम. Let's go, Kurio. Alter Ego. Heavy investment. And that's with this op. Big financial drop onto this. ये देख jump spot. Nice scheme. They want to close this out and they want to do it quickly. Ooh, Oppa Cypher. Lucky there to survive potentially. Guys, तुम लोग ने एक चीज समझा कि ये लोग कितना अच्छा अडॉप्ट करते हैं. सामने वाले कौन सा स्टाइल खेल रहे हैं? APH वाले कॉन्टैक्ट प्ले कर रहे हैं. So what is the best thing against contact play? साइफर ने ऑप उठा लिया. करो कॉन्टैक्ट, कितना करना है? कितना अच्छा अडॉप्ट कर लिया ये लोग ने. Nats is going to be alone here, but वापस ए पे again? वापस मरेगा मेरे को लगता है. Dead. You need to smoke it. नहीं. There's no way you don't smoke it. A little bit of damage taken. It was a fast peek. Out comes the paranoia. That's going to afflict multiple people. Nats standing ready once again with the big weapon. Hi. They won't be able to hit themselves Omen. in the shot because are you simply too fast on the body? अरे nice. बहुत अच्छा है इन लोग का. हर बारी नहीं करते. जिसको एंट्री करना है एंट्री करते हैं. बाकी लोग स्मोक पुश मार्क करते हैं. यही हम लोग बहुत गलती करते हैं इंडियन टीम. साइड घुसना है तो घुस जाते हैं. ये क्या वॉल बनाया? They didn't see the gap in the wall. It's a freebie for Adrian. This would be a horrible way to lose at Action PH. They need to win this duel. क्या वॉल बनाया था? Close for a second there, Harry. Alter Ego, that round really shouldn't be let slip. That was their round to win. And Action PH, they've left us with some very good executions now. These starting to look better and better for them. I'm split A side, एक बंदा साइट और एक बंदा हेवन तो होना ही चाहिए. नहीं ऐसा नहीं है. वो एक बंदा साइट में क्या करेगा? Like if you have a team plan or something, then it's fine, but it doesn't make too much sense. Because for example कि तुम्हारे हेवन बंदे को isolate कर दिया, smokes आया, उसपे need आया हेवन पे या slow आया, और साइट पे तुम्हारा एक ही बंदा है. Who will support him? वो एक बंदे के अगेंस्ट 4 बंदे घुसेंगे. I like it. तो वो 4 बंदे अगर घुसेंगे तो वो एक बंदा कितना मार सकता है. I believe कि वो साइट वाले बंदे को मारने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि रोटेशंस जो आते हैं वो ज्यादा परेशान करते हैं. तो ऑलवेज केयर रहना कि वो हेवन से स्मोक से बाहर आएगा, सिटी स्मोक से बाहर आएगा. केयर करना वो चीज है क्योंकि साइट वाला बंदा ज्यादा टेंशन नहीं देता है. देते वो लोग. They're prepared to try and make some kind of distraction. The Seekers sent high. Will they make it over the wall? Though no, all of them are stuck on the other side. They finally move on through. And here comes the flank from Kush. And खत्म. Tata. Bye bye. How did Julio get that much value? Alter Ego. Backstab. What an amazing retake there.
And Action PH, how else can we say it? They've been alter eco'd. They have been alter eco'd and they Will Rafiq play on Jet on all maps or Raze in some maps like Fracture? लिखते हैं प्रमोद. टीबोन का Discord नहीं है मेरे पास. क्या? They have been alter eco'd and they've been alter eco'd. What a game! In an incredible way. That near sight from the sky on top of the flash. टीबोन का Discord दिखना है रे. And then Julio, what a way to end your map. Granted, it's a little bit closer than expected. You are strained a little bit, but जाऊंगा you're able टीबोन to का open Discord your नहीं है best मेरे of five पास. with a map win, in which you're able to go 13-10. क्या करते हो रे A तुम? well-earned victory from a very, very solid roster. I mean, when it comes to turning around that kind of destabilizing momentum, right? Like, just about managed to... Oh, Nats भाई AC on कर रहे क्या? 12-7. Like, there's a world where that really damages your... Guys, analyze करना है रे मेरे को. From perfect retake ability on an eco, that's the kind of thing where you're like, okay, it was a little bit of a fluke from Lord them, Bathura is but doing just- party. You we're can still ask the him best क्या players करना है out मेरे in को this उधर world. We just जाके need to get them भाई on लोग retake तुम where लोग they क्या have all of चाहते them हो कि alive, मैं we just बकचोदी करूँ put the इधर near site exactly Yeah. where we needed मैं to, and आराम they से managed मैच to do it देखना without है having to सीखना rely है on आया Astro हूँ Synergy. Actually, this is one of the first ये बुला रहा है वो बुला रहा है times कर रहे हो we've तुम seen लोग good synergy of the utility, and it wasn't even off an Astra, it was off मेरे the Discord पर Omen अभी himself. वैलो प्ले मेरा Discord I think अपडेटेड the नहीं है रे Omen and करूँगा Sky, they work together so well in both retakes and with some guarded control, particularly in mid. I was really impressed there by that final round. Those Seekers combined with the Paranoia onto the player backside meant that there wasn't a single player who wasn't blinded, and the ones who weren't blinded had their crosshair pulled to those Seekers. They're aiming at a wall. Really, really solid stuff from them. And Yeah? a very Nahin. impressive way to close out your map. And that should really add a bit of paranoia to Action PH, because they now in the back of their minds think, रुक जा "God, टीबोन we के now Discord में really जाता have हूँ to तुम win लोग our map परेशान कर because दोगे रे you can't allow Fracture to be where your series point goes, especially when you play Descent. And while your Ascent is good, you also know full well that, well, Alter Ego, they're also pretty bloody good when it comes to Ascent. And है one of the शायद से मेरे worrying पास things right टीबोन now is that Kush and Julio, they are not looking weak, man. Like, No, they're not. the supporting cast is looking pretty damn strong. Sure, Del B continues to steal the show every now and again, but to have people who are not whiffing consistently, to have these aimers who are able to play their 50-50s well, अबे and then टीबोन का willing to be Discord able to दे trade out on Yep. entries has allowed for so many good retakes. WhatsApp and में दे, post-plant WhatsApp में दे दे. positions for Alter Ego. Yeah, you're absolutely right. What it means as well is that we look over to Raul Phil the Goa कब members जा रहा है? of Action PH, particularly Georgie. He did not have a great game at all, Harry. We can outline that with stats. Let's bring up our scoreboard. Yeah. हाँ And, bully Georgie a little bit. Poor guy. Yeah. कुछ भी नहीं It 12 was- चाहिए kills, wasn't 148 pretty. HDS. ओ हाँ Wasn't great. Test Yeah. ranked at EC2 least doing EC2 pretty चाहिए. well today, and Emon does appear to be vaguely in form. only But mouse look at the real tight spread of kills across Yeah. Alter Ego. Everyone was doing their job. Kush was getting so इसी much one है मेरे value. पास मेरी क्रिसमस Austin बजाज भैया Jackson on the टीबोन desk, कॉलिंग he टीबोन was कॉलिंग जा रहा हूँ moving भाई that जा out रहा a हूँ भाई little bit more often than not, in my जा रहा हूँ opinion. On the भाई. desk, he was on the defense. The second ये इंडियन पब्लिक को Medeski बकचोदी was not चाहिए up against the lurk. They had to stay in इनको position नहीं चाहिए. because Kush had conditioned them so hard. Alter Ego. They're going to be walking बोल आ गया away भाई. with our first map right here. Action PH. They might... पब्लिक वीसी में They हूँ might feel a little bit more confident on Ascent. They're going to be able to use Georgie at their best, playing the Jet on a map where Jets are famous. You want to think about CNED. टीबोन को बोल ड्रैग करने. Global champions really take over these games. They're deep in अरे our क्या MVP कर रहे हो standing, guys? and they're gonna be आराम looking से to आराम extract से. a little Anti bit Baijan, welcome to the Watch We 40. have seen play the Jet before. Hello brother, Question is, what's will up? they be able to match What's on? up? बस We're gonna बढ़िया go आप to a बताओ. quick break. बस बढ़िया When we भाई come भाई back, मेरे map number मेरे को 2, पागल baby. कर दिया लोग ने टीबोन बुला रहा है टीबोन बुला रहा है टीबोन बुला रहा है अरे हम सब इधर ही बैठे थे Go on, सोचे कि Harry. कोई I know और you कर रहे want हैं तो it, साथ bro. में Let's मिलके. go on. सही है Let's सही है Let's get you back to him. सनी वो डीएम चाय पीने के लिए गया समझ रहे हो. हाँ चाय पीने के Oh, लिए it's है me. I'm the problem. It wasn't me. I wasn't the problem. तो मैं भी चाय पी के I'm आता so हूँ excited. हाँ ठीक है. Excuse me आप भी. But yeah, let's take a look at these highlights. For me, Oh. Nats and अरे वॉइस कट रहा है आपका. Kush was हाँ एक सेकंड वो मैंने Kush डिस्कॉर्ड on का his सेटिंग्स attacking ठीक side है. just kept so चाय much पी के away आया from दोस्तों. Sage on the other ठीक bomb है. sites
that even then in that clip there, he seems आ रहा CT हूँ 2 मिनट दे spawn. दो Like he's really just lurking out of his mind, and I love that. So Kush for me is the MVP of this. Nats as well, getting so much consistent value off that high tower camera. I love how Medeski like took their time there. It's like, you know what? I can savor this one a touch. I can really enjoy the flavors of it. Have a moment. But we've had some excellent aims. That was a really good adjustment there from Georgie, despite Julio having the drop. There was a world there where if Julio had a rifle, maybe that goes another way. Maybe that round turns differently. And this was a really interesting round here as well, where we saw some awesome pathing of the showstopper over to the abandoned spike in sewers, but no one was really there to catch the ultimate itself. No, you're absolutely right. And for me, it felt like Action PH, they were playing kind of reactively throughout this game. They were never really taking the initiative. They were never really leading Hello a guys, charge. what's up? They were always defending a position. They were always fighting from a man down. They were always having सुट्टा to bro, इधर कोई नहीं पीता figure bro, out where the सुट्टा. lurker is. Hello guys. There's never attempt at some किधर इसका some chat tempo किधर changing. भाग रहा है And chat. even then, they sort of shift into a main, but there's no utility to back it up. It feels very kind of lackluster when they're going for this momentum. What's up play, guys? क्या हो रहा है and there you guys? go, they just shut it कोई down. याद है guys? मैं भी streamer था एक point पे मैं भी stream करता था. Consistent. किसी को याद है क्या? Couple of really cool clutch plays from Action Is PH. Rafuel from Goa? No bro, he's not from Not Goa. dropping silly kills. Look at this. Like, I love that just degree of respect. Like, it was only Iman with a sheriff, right? एक का name flash मत कर भाई. किधर करता हूँ भाई? इतना अच्छा support करता हूँ फिर भी बोलते रहते हो भाई. मैं क्या बोलूँ भाई? All the paranoia to guarantee this kill on our triple kill. क्या हाल है guys? क्या हाल है? What's up Rakshit? How are you bro? Welcome to the stream. ये चैनल को रीनेम करने वाला हो गाइस. क्या नाम क्या करूँ ये चैनल का रीनेम? हिक्का डॉट I mean, they're not all एंटी great, हिक्का but they can play a race. समझ नहीं आ रहा है. So I would be interested to see if you see Georgia. याद है ना भाई सिम करता था कोई किसी पर क्या करता हूँ भाई सिम हेलो घर कब जाओगे? अरे मैं जा रहा हूँ गाइस. मैं घर जा रहा हूँ इन जनवरी. आई विल बी टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक. फिर देखना क्या होता है. इकाद को फ्लैश मत कर. क्या गाइस फ्लैश करेगा तो ब्रो इतना अच्छा फ्लैश दे रहा मेरे टीममेट्स के लिए. एंटी क्यों एंट्री कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरी फ्लैश क्या ब्लाइंडेड. बुली कर रहे हो भाई साहिल भाई. बुली कर रहे हो भाई. नंबर 1 आप बताओ. नंबर 1 बॉयज. नंबर 1 इक्का ब्लाइंड है. ठीक है भाई ये कर लो भाई. पहले रिवर्स से सेंटिनल वैंडल कर लिया. हाँ यार मैं सोचा स्टोर में आया था सेंटिनल वैंडल तो मैं सोचा मैं खरीद लूँ. फिर थोड़ा फील आया यार वो है थोड़ा समझ रहे हो वो वाला फील आया हैंडल में. क्या लाइक का अभी जीतना है नेक्स्ट टाइम. पक्का भाई पक्का. अभी जीतने की कोशिश टायर लाइक कोशिश क्या बोलते हैं यार उसको. जीतने का तैयारी कर रहे हैं. सॉरी क्या भाई बीच खेलो बेटे. ऐसा है क्या? ट्राई करेंगे. साई के साथ कभी खेलेंगे यार. साई अभी बड़ा आदमी बन गया है. इज टू बिजी यू नो. क्या कर सकते हैं. हाँ तो रॉफ्यूल को फ्लैश करते थे इसीलिए. ब्रो दैट इज पार्ट ऑफ द प्लान. रॉफ्यूल को ब्लाइंड करता हूँ तो रॉफ्यूल का खून खुले वो गेम में और वो गुस्सा हो जाए और फिर टपाटप मारे सबको. इक्का ठीक है भाई ये कर लो भाई. क्या ही चाय था भाई. मजा आ गया टीपुन. क्या मैं भी ऑर्डर कर रहा हूँ. क्या ही चाय था ब्रो. मजा आ गया. और एंटी भाई क्या ले. अरे हिक्का क्या ले मेरे भाई. टीवन क्या ले. क्या ला क्या सीन भाई लोग. भाई ये कास्टर का नाम सब लोग कर गए क्या? नहीं अभी जाएंगे सब. ये आंटी का कहा भाई टीबोन. चेंज हो गया. अरे हिक्का ये हिक्का. हराम ज्यादा आवाज नहीं पहचान रहा है भाई. टीबोन ये जो कास्टर का नाम पहले देख ले. तो 10 रुपए की माइक से बाहर आ. तेरा आवाज नहीं आ रहा. अरे ये 10 रुपया मेरा माइक नहीं. मेरा तो ज्यादा ही एंटी का. क्या करूँ भाई. ठीक है मसले के बाद. और हिक्का कैसा है मेरी जान? सब बढ़िया ब्रो. कैसा है तू कोलंबो आने वाला था. ये सब कब आ रहे हैं ये सब. क्या सीन है ये सब. हाँ
मैच होता नहीं है फिर समय नहीं नहीं चाहिए टिबोन हाँ बोलो। ये कास्टर का नाम देख लेग्स डे वो मेरे को याद करवा रहा है कि लेग्स डे नहीं किया इस हफ्ते, करेंगे। हेलो द मास्टर लॉर्ड क्या ले देयर सागनिंग स्लीपिंग रेडी यस यस सागनिंग का बेस्ट ऑफ लक फॉर 2020 थैंक यू वेरी बाय एंटी ऑपर या इका ऑपर इज द बेस्ट ब्रो ऑब्वियसली देखा था अरे पहले मेरा क्या फेवरेट मारता था स्ट्रीमर आ गया पहले क्या मारता था अभी नहीं दे रहे यार आप बोल रहे नहीं तू मत करो मैं क्या बोलूं भाई प्लेयर एज इन एवरी मैप कोशिश जारी है ट्राई करेंगे बराबर इक्का बस स्ट्रेच रिवील मत कर सारी कहाँ स्ट्रेच रिवील करता है भाई ये सब बेटिंग देने में होते हैं रफील वैसे भी बहुत मारते हैं बंदा ब्रो हाउ इज योर हिंदी गुड cause my ancestors are from India bro इक्का तो वो थी वही तो बोल रहा वो थी इक्का ब्रेक पे लंका जा रहे हाँ ब्रो आशीष मैं एक्चुअली जनवरी फर्स्ट वीक जा रहा हूँ लंका हेलो इक्का हेलो व्हाट्सअप गाइस एंटी इज बैक बात करो यार बोलो एंटी को कितना अच्छा प्लेयर हूँ रेस खिला सब में एंटी गर्म पानी भी लेके आना गरम पानी क्या है इस बार हिक्का क्यों नहीं दिख रहा है नहीं दिखेगा बंदा चेंज हो गया है अभी सब कनेक्ट होगा एंटीडोट डिफ है भाई तुम लोग को मालूम है हम लोग एक मैच खेल रहे थे अगेंस्ट एक्सो शायद से जब मैं पहला आया था टीम में तभी फाइनल मैच बाइंड था 1-1 चल रहा था फाइनल में बाइंड था तो मेरे को कैसा इंट्यूशन आया कि भाई अब राका भाई ने बोला है बाइक लेना पड़ेगा भाई मैंने ऑर्डर कर दिया मैंने तभी बोला कर दिया एक सेकंड सनी का आवाज आ रहा है तब मैंने बोला था हिक्का तू खेलेगा क्या रेस खेल उसने खेला और उसने मार दिया रे खुद को वो ऐसा फील आया कि लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा को बॉल डालने दे दिया फिर जोटा कप नहीं खेलोगे देखते हैं कैसे चल रहा है क्या होता है नमस्कार एंटीदा नमस्कार अंकन वेलकम टू द स्ट्रीम हेलो रेक्सी मेरी जान रेक्सी आके चला गया एंटी डिफ हो रहा है भाई रुक जा हॉटकी कैसे सेट कर की बाइंड्स faster response time. If all this wasn't enough, check out reason number 3. The 5th gen Aeroblade 3D technology plus Logic Flow, which lets you say goodbye to moving images. Shout out to the Predator Sense dashboard, which lets you monitor your system, overclock, and customize everything instantly from one place. I think it's clear that this system is cleared for एसुस वाला यार कीता मातो अरे एंटी क्या ले नेक्स्ट कौन है बस भाई हो गया तेरा चाय पी के हाँ पी ले क्या मस्त चाय बनाया आंटी ने नाइस गुड चैट पढ़ रहा है बाबा भाई सनी मैं कोलकाता आ रहा हूँ तू कोलकाता से जा रहा है भाई क्या सीन है हाँ ना भाई को तू कल कब है आ रहा ना? है कोलकाता कल मीटिंग है ना फुल मैं आ रहा हूँ 30 तारीख को रे और मैं 29 को जा रहा हूँ सिलचर हाँ फिर सिलचर से एक बार कोलकाता होके चला जा मुंबई उसमें क्या है नहीं मेरा ऑलरेडी ना वो हो चुका है टिकट अरे टिकट तो कितने बार हो चुका है पहले तेरा फिर भी कैंसिल हुआ है तो उसमें क्या है बट एंटी इस बार का टिकट जो है ना फॉर लाइक अभी ये जो मंथ है ना इसके लिए टिकट का प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादा है वो ज्यादा महंगा है माँ कसम सच रे हाँ ना एंटी दा रेगुलर स्ट्रीमिंग कब से देख सनी कल रेगुलर स्ट्रीमिंग करना बोल रहे वही तो कल से कल एक गाना हो जाए क्या नहीं अभी नहीं टॉगल म्यूट
क्या लगता है एंटी कौन जीतने वाला है? एक मैप तो अल्टर हो गया ईगो, एजी। कंफर्म न्यूज़। कंफर्म है, ओके। एक तो बताया मुझे लगता टीबोन है ने। ऑल्टर ईगो के साथ ही मैं जाता हूँ। ओके ओके, देखते देखते, मतलब यहाँ पे मैं अकेला ही हूँ जो। मैं तो एजेंट्स देख के बताऊंगा कौन जीतेगा। हाँ, मैप आई और थिंक एजेंट्स आई थिंक यही रहेगा मेरा, अरे लास्ट मैप। वही। उसके बाद मैं निकलूंगा। किधर निकलेगा? आज कोलकाता पे लास्ट डे है हम लोग का। तो किधर जा रहा है? डबल डाउन? नहीं नहीं हैदराबाद कहीं, आ रहे हैं। नहीं नहीं कहीं पे जा रहा हूँ। अरे अरे वही है, शाम को निकलूंगा। अरे चाय बिस्किट खाने कहीं पे। चाय बिस्किट? समझ रहे? हाँ। समझ गया भाई। समझ रहे? मतलब एक अड्डा है जहाँ चाय बिस्किट होता है, समझ रहे? कैरम भी रहता है, चाय बिस्किट हाँ, एकदम एक एक ये ओ चाय बिस्किट तेरी। कैरम। फुल। तुम लोग कब से जानते हो रे एक दूसरे को? अरे बहुत साल हो गया, बहुत साल हो गया, बहुत साल। हो गया। 2012-13 से शायद। ओ भाई। हाँ, तो मैं एंटी को सबसे पहले जानता हूँ, उसके हाँ बाद मैं शक्नी को जानता हूँ। हाँ वहाँ क्या? यस। हाँ तो तुम मेरा लोग साथ में टीम में थे, एक टीम में? नहीं, ये सिलचर के टीम में खेलता था, मैं कोलकाता के टीम में खेलता था। तो हम लोग बाहर टूर्नामेंट्स खेलने आते थे ईस्ट में, या ये लोग आते थे कोलकाता में, तब हम लोग मिलते थे। और सागनिक और एंटी सेम टीम में थे? नहीं, सागनिक मेरे से बहुत जूनियर है, वो बाद में स्टार्ट किया है गेम खेलना। क्या खेलते थे वो, CS:GO या 1.6? 1.6 भाई वो डेस अलग ही है बे। भाई, बहुत अलग कैफे थे। में कैफे एक दिनों दो भाई, 3 हजार के लिए जो हम आते थे खेलने के सच लिए, रे टीबोन, उसमें अलग ही फील था यार। कैफे के दिन उसमें कुछ अलग है भाई। हर एक मैप के बाद, समझ रहे हो, 12 समझ रहे हो? यस, हर एक मैप के बाद 12 चाय के ब्रेक, बिस्किट। चाय ब्रेक, बिस्किट, उसके बाद वापस आने, वो लैन में गाली देना, ओए अरे अरे गलती किया तो बाजू वाले को टपली। टपली, और नाइफ का अलग मजा, वो अलग ही मजा है। भाई अलग ही है रे। पीछे 4 फार बंचे, हमको ये करना, ये लेट्स गो DFI, मारो मारो। अरे अलग रियान, फील। वेलकम टू द स्ट्रीम रियान। रियान का मोन्टाज तो है, हाँ भाई, इंसेन मोन्टाज है भाई। मोन्टाज तो है। तो गलत लाइन में है रे रियान, मेरे को लगता है कभी कभी। गलत लाइन गया वही तो। कैफे में नहीं जाओ रियान। कौन से कैफे में तेरे को जाना है? चल, गुवाहाटी में मेरे को नहीं मालूम, अरे कोलकाता गुवाहाटी में। में है ना, गुवाहाटी में है ना भाई कैफे, तेरे को उधर और शुरू वहाँ हो गया, पे होने वाला है अभी। मैप 2 एस्केंट है, ठीक है। कोलकाता में कैफे बहुत है, आजा। अभी तो कोलकाता में कैफे, अभी सबके पास पीसी आ गया है रे, या तो नहीं तो हाँ मोबाइल आजकल। है। आजकल कैफे वाले कल्चर प्लस कोविड सब कुछ मिला के खत्म हो गया पूरा। आई एम गुड शॉटी, हाउ आर यू? हाँ ट्रैपजोट होता है। अरे हाँ ना, अभी आजकल सबके घर पे पीसी है भाई, वो वाला वाइब जो था पहले वाला, वो अरे वाला वाइब अभी अभी प्लस नहीं कैफे मोबाइल में। स्पोर्ट्स भी आ गया है ना, तो मोबाइल पे भी सब लोग गेम खेलते हैं। पहले हम लोग जब स्टार्ट किए थे, हम लोग पे मोबाइल स्पोर्ट्स था ही नहीं तभी। मोबाइल में वो सांप Exactly. वाला गेम था रे, नोकिया में, वो खेलते थे। मेरे को तो 1.6 से ही नशा शुरू हुआ था बे। सच रे टीबोन, वही तो गेम कौन था। सा नशा टीबोन? मतलब वही चाय बिस्किट का। अच्छा चाय बिस्किट नहीं रे बाबा, अच्छा अच्छा। रात भर खेलना, वो अलग ही था यार। सर्वर में 5 मैन ढूंढना भाई, उस टाइम तो ऐसे होता था, मैच सर्च कहाँ होता था, यही जॉयस्टर होता सर्वर। था। हाँ, प्राइवेट सर्वर में खेलते थे। हाँ लैंड सर्वर बना के हाँ, टीम लैन, और मारो। दूसरा वो कस्टम सर्वर लेके 1000 महीने का, हाँ और उसमें हम बंदे बुला के, कि भाई कितना मेहनत था यार 1.6 में। उसके बाद CS:GO में मैच मेकिंग शुरू हुआ। CS:GO में मैच में एग्जैक्टली। हाँ, 1.6 में सब वही था, कैजुअल मैच, ये वो। यस लॉन्ग टाइम बस, लॉन्ग टाइम। ठीक है, अब बता एजेंट। टीबोन, टीबोन ए अभी बता दे सनी, कि मेरे को एक एजेंट हेल्प क्या कर। बोलना। तेरा और मेरा जो पुराना पिक है ना, वो आसाम वाला पहला पिक, हाँ बहुत पहले वाला। हाँ वो भेज जरा, मेरे को रिक्रिएट करना है। ठीक है, मैं तेरे को भेजता हूँ ढूंढ ढांड के जहाँ पे मिलेगा। हाँ, मैंने ढूंढने की कोशिश किया है, बट वो मिला ही नहीं थे। तेरे को मिल जाएगा, क्योंकि तूने मेरे को दिखाया था थोड़े टाइम पहले, मतलब कुछ महीने पहले। ठीक है ठीक है। भाई मेरे हिसाब से
ये भी अल्टर ईगो जीतेगा, मुझे लग रहा तूने है। ये अरे वो देख के बोल रहा क्या पिक? नहीं मतलब साइफर इतना यूज नहीं है, लेकिन वो डिपेंड करता है बंदा जैसा खेलता है, समझ रहे हो? देखो तुम लोग को मालूम है, मेरे को वो इन लोग का साइफर मतलब एक्स फैक्टर लगता है रे ये टीम का। नेट्स, हाँ भाई अच्छा नेट्स खेलता ना, है, नेट्स, अच्छा हाँ। खेलता है, क्या अच्छा खेलता है। बाप डिफॉल्ट करता है रे अपना। हाँ। हाँ केरिशव ओके, सब रिवर्सी में भी ठीक हूँ। 2022 में डीएम 2.0 दिखेगा, तब डीएम 2.22 दिखेगा। अरे 2.0 हो गया है सबका, क्या है तुम लोग अभी भी 2.0? वही अभी 2.0 में क्या अटके, अभी 2.22 होगा गाइस, जो भी होगा। 2022 में 3.0 भी दिख सकता है, क्या बोलता है रियम? यार मैं तो बस वेट कर रहा हूँ अगले साल का नया मेटा ये लेके, क्या है? चेंबूर। चेंबूर भाई, चेंबूर और चेंबूर वो भाई। क्लैश वाला, वो कौन है यार दूसरा? केओ भाई, केओ भाई यार यूज करो यार, केओ यो मजा आता है देखने। बात तो भाई सही है। इस बार चेम्बर जब आएगा ना, मतलब वो तो आ ही गया ऑफ कोर्स, जब भाई मेटा वो में आएगा ना बहुत फिर। बीटी है यार, बहुत बीटी एजेंट है। मुझे लगता है इवेंचुअली ना जेट वो डिलीट हो जाएगा बे, मुझे लग रहा है वो निकाल देंगे जेट। इंडिया में मुश्किल है भाई, इंडिया में क्या है मालूम है, इंडिया में जेट पनिश नहीं कर सकते कोई। नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ रेड गेम वाले निकाल देंगे, मुझे अच्छा लग रहा है। इन अच्छा, लोग का वही है ना कि एक एजेंट को वो करते हैं इवेंचुअली। पूरा नर्व कर देते हैं। हाँ नर मतलब एंड में ऐसे ही निकाल देते हैं वो। एंटी द साउथ सिटी मीटअप, मीटअप का जो भी है 2-3 में पता चल जाएगा इंस्टाग्राम में। Of course, it's caliber that the Eagles in, so I would assume it's the caliber the Sheriff's in as well. 50 Sheriff, I mean, it does one shot headshot, would make sense, but we'll have to see. अबे We'll have to see what can be done now for. भाई एक डीएम करो, इधर मैच चल रहा है तुम लोग को। Yes, a little bit more damage. मुझे लग रहा है ये गेम क्लोज होने वाला है, मुझे लग रहा है। From Alter Ego. They're starting on their हाँ क्या? defensive side. किलजॉय तो एक एजेंट के हिसाब से किलजॉय बेटर है ये मैप में देन साइफर। हाँ बात तो सही है। वो बंदा कैसा खेलेगा उसके ऊपर है भाई। हाँ रे लेकिन वो नेट्स तगड़ा खेल। इसके लिए दादा आपका फेवरेट सीएसगो ऑपर कौन है? मेरा फेवरेट सीएसगो ऑपर डिवाइस का तो ना इधर रहा ना उधर रहा हो गया। लड़की का चक्कर बाबू भैया। बाबू भैया 2022 will be DMCL, let's go visit. Oh my god, thank you so much मेरे भाई। ये लगा देना लाइट। लाइट्स ठीक है, घर का लाइट। थैंक यू। चलो लाइव। अटैकिंग कौन है? एपीएच भाई अगर 8 राउंड जीता तो जीता, वरना डिफिकल्ट है। ये एड्रेन है मालूम है ना सनी? हाँ ट्रिप में अटका क्या? नहीं अटका, अटका। So to highlight as well, there's 2 frenzies available for actually BHN. On top of the fact there's 4 ghosts on Alter Ego. This is an angel this round, better thing. Well, that shows exactly why. ओ भाई हो गया भाई, इधर ही दिख गया मुझे। भाई शुरू हो गया, इन लोगों ने वो किया। बीएम हाँ रुक जा, मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। You get pinged up and it's easy to spam you through the spokes. At that point, it's a one-way that's against you. Really strong pistol. डिवाइस का तो गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, ये सब न्यूज़ नहीं मालूम मेरे को भाई। अबे वही तो सीन है। अभी डिवाइस एस्ट्रालिस पे ज्वाइन करना चाहता है दोबारा। नमस्कार अंकल नमस्कार। अच्छा यहाँ पे एक राउंड खत्म भी हो गया। And this time it's aggression. That's really going aggressive. Oh, that's emboldened here. माँ कसम। WW चालू है हाँ WWE चालू है इधर तो। क्या अग्रेसिव खेल रहे बे। ट्रैप लगा के आगे चला गया। It's unique, isn't it? But ऐसे प्लेयर चाहिए रे देख को। ये जो अभी देख, अभी जो खेल रहे, अभी जो स्काई खेल रहे वो लोग के टीम में, अरे फिलीपींस की टीम पे जो खेल रहे हैं वो पहले खेल रहा था रेज। ऐसे प्लेयर चाहिए रे बाबा, हर एक एजेंट जिसको आता है खेलना। सच है भाई, मेरे जैसा ना। हाँ हो गया भाई। सनी तेरे को याद है मेरा रेस? क्या? अरे क्या इंसेन रेस था पूरा जमीन वाला, मजा आ जमीन गया वाला था। छोड़,
ए रश का कॉल है, ए मेन से अंदर एक सैचल अंदर गया, दूसरे सैचल में वापस बाहर आया यार। भाई टीबोन, भाई टीबोन क्या हुआ? है क्या? सुन हुआ? सुन, हम लोग जब एक टीम में थे ना अभी, हाँ, मैं एंटी हैवान सब, तो क्या सीन हुआ था, एक राउंड मैप यही है एसेंट, ठीक है, हम हाँ, लोग को ए पे रश करना है, ठीक है, हम लोग ने सबका हो गया कॉल विल कि मैं मारूंगा डैश, और एंटी खेल रहा था रेस, तो उसको अल्ट मार के आगे जाना है, 2 सैचल मार के, 1 सैचल मार के, जो भी है। स्मोक वोक गया, नहीं अल्ट भी नहीं था, और नॉर्मली एंट्री कर रहा था मैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो क्या हुआ, और जो था, और उसके बाद क्या हुआ, अरे हम लोग के सामने आगे एक स्मोक आया, ठीक है, तो हम लोग ने सब बोला कि ये अभी जा रहे, ये तू स्मोक कर, ये कर, हुआ। उसके बाद एंटी ने स्मोक के अंदर एक सैचल मारा कि वो जाएगा, उसने एक सैचल मारा, हम लोग पीछे आए और वो हल्का सा आगे गया, और एक सैचल उसने अपने मुंह पे मारा, वो भी पीछे आ गया, हम लोग सब वहीं पे अटक गए एक साथ, और हम दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे बैठ के। उसके बाद क्या हुआ? किसके अगेंस्ट था ये? कुछ तो क्या बोल टीम रहे? रहेगा, किसके अगेंस्ट था मालूम नहीं, भूल गए, बट कुछ ओ तो भाई टीम था। उसके बाद वो राउंड पूरा हंसा, मैं हम लोग सब, उसके नेक्स्ट राउंड भी हंस राउंड नहीं हो पा रहा था मेरे से, क्योंकि मैंने अपने आंख से लाइव देखा था ना वो चीज, हाँ, हाँ, हाँ। इसके लिए भाई। मतलब पहला सैचल एमेन के अंदर, दूसरा सैचल एमेन के मतलब वापस सेम पोजीशन में। हेलो सर्वेश सर, अरे हाँ ना, कैसा अजीब लगा कि अपना रेस एक से मार के आगे गया, हम लोग भी एंट्री करने, दूसरे से मार के हम लोग के मुंह पे आ गया फिर। अरे होता रहता है रे, क्या कर सकते हैं। टाइमिंग टाइमिंग Very पकड़ ले डेल भाई। ओ भाई, F हो गया, F अरे हो गया। देखा मैंने, डेल्प्स देखा हल्का सा डुबा दिया है यार, कितना टूर ऑफ स्नाइप है यार वो। एक्शन पीएच बॉल्स ही खेल रहे वो मुंह पे। हाँ भाई, कोई तो वीएलटी में सिर्फ जेट ही खेलता है, ऐसा मत बोलो रेक्स केली को चलेगा। एक्सो का लाइनअप खेलता लीक रहा। कर दो, आई मीन एसएटीएल का, नहीं मालूम भाई। इंस्टीट्यूट का क्या हो गया लाइनअप? तो वही तो है ऑलरेडी। क्या मालूम, ये लोग को बहुत मतलब हम लोग से ज्यादा मालूम रहता है रे। एक्सो का वही लाइनअप अभी मैंने स्ट्रीम खोला तो स्ट्रीम पे बोलता है कि घोष ने छोड़ दिया 100, तो वो कोई और टीम ज्वाइन करेगा, ये वो, मतलब कब हुआ, वो और ये मेरे को क्यों नहीं पता। ट्विटर पे शायद ट्वीट किया, वो फ्रीलांसर है शायद, ऐसा कुछ। अच्छा, छोड़ नहीं दिया रे क्या कैम करन उसने? मैंने, अरे वो हाँ। चैट मिस नहीं किया, देखा मैंने कैम करन, सबका करता हूँ मेरी चैट, ऐसा तो अभी नहीं। नया लाइनअप ब्रो एड्रियन किंग 7 मार दिया, हेरम प्रेस्टन भाई 2022 बी मेन पे ऑप लेके एंगल लगा के पूरा डीप एंगल लगा दिया, चार मैन ए रोटेशन। ओ तेरी, ने काटा। अगर इनको ए जाना है तो बी वाले को पीछे भेजना है एनीवे। वो उसको समझ में आ गया बे, कुत्ते को मार दे उसने। हाँ देखना वो बी वाला कितना आगे एंगल लेके बैठा है, तो यही रहेगा ना। तो क्या अभी एमेन वाला को मार दिया तो फिर एलो, अरे। हाँ मार दिया। सनी टीम के स्मोकर गया, हाँ बोलना। तेरे में गुर्दा रहेगा क्या कि तेरे को मालूम है ये लोग ए आ रहे, तेरे ऑपर के पास डीप एंगल है, फिर भी तू एमेन पीक करेगा ऐसे सोवा मारने के लिए। तो आ भाई है, सो गुर्दा तो बहुत है, सी बे। माँ कसम रे, गुर्दा तो है। अरे जेट समझ आता है। हाँ मतलब गुर्दा है विद जेट। हुलियो लुओ, ये देख, हाँ ये करो। ये देखो। आई एम गुड स्मोकिंग, आई मीन हाउ आर यू? कोलकाता मीटअप करेंगे भाई, 2 जगह करेंगे, नॉर्थ एक दिन, साउथ एक दिन। भाई टीबोन एक बंदे ने लिखा है कि अरे सनी इमेजिन ए टीम विद द टीबोन एज कोच, अब बस तुम, अरे भाई वो बस easy सोचो ही है। तुम, भाई क्योंकि मस्ती भी नहीं कर रहा हूँ अगर वो रियलिटी हो गया तो टीम ही डूब जाएगा। भाई, नहीं मस्ती बच नहीं कर रहा हूँ। बच। टीबोन कर सकता है कोचिंग, माँ कसम बोल रहा हूँ। यही चाहिए था, थैंक यू सो मच, हाईलाइट में डालेंगे। Go. Yes, I am Bengali smoky. असली बंगाली है दोस्त, वो बहुत मछली खाता है। Yes, yes, असली बंगाली भाई। बट अरे बट ये नकली बंगाली क्या होता है? जो मैं हूँ अच्छा। मछली ने खाता, याद नहीं है? आई थिंक अरे वो नकली बंगाली है शागनिक है फिर। शागनिक तो भाई
दाल भी उसको तीखा लगता है, कैसा बंगाली है मेरे को मालूम ही नहीं है। EXO is disbanding his roster. 4 players from EXO are freelancer will join SC12 with streaks and binks. भाई ये सब किधर से आता है भाई न्यूज़? माँ कसम तुम भाई लोग ये लिख गलत रहे हैं बे कुछ भी, तुम लोग इधर गलत बोल रहे हैं लाइन में सिमर हो। भी जा रहे हैं 12। ये लोग गलत लाइन में है, ये लोग को मीडिया लाइन में जाना था। ट्रिप तोड़ दिया, गान फट गई इनकी, अभी तो मिड छोड़ देंगे। टूरेट आया टूरेट। स्पॉट कर लिया टेरे से। ये जेट में, इस जेट के गाने में भी गुर्दा तो है। सही बात है, जेट के गाने में गुर्दा नहीं रहेगा तो कैसा जेट है फिर? वो भी है। भाई 9-3 लगले रहे। What's this? नाइस किल नेट्स ब्रो, वन वे। भाई ये तो अरे अरे शाग्निक जैसे आगा अभी इसने। भाई वो मार रहा है बे साइफर। ओ बंगाली वर्ड भेजो क्या? डैमेज दे रहा है सनी इधर। यस वी बतुरा इज डूइंग वीएलटी आश्चर्य। यस 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 मैंने डाल दिया, स्वाइप अप भी डाला, जाके देखो गाइस मेरा स्वाइप अप वहां पे है वो लिंक। शुरू हो गया क्या वो? नहीं अभी भी 1 घंटा उसका बाकी है। उसका राइट्स है क्या सबके पास, या ओपन सब कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं आई थिंक ये सिर्फ उसको ही मिला है, मतलब उसने लिया है राइट, शायद कुछ ऐसा है शायद। into an op that's already killed your ulting jet, and it just shuts them down. The ping's now available for Nats, and early usage. ये मेन कंट्रोल Not only reveal the presence ओपन ने पिक ला लिया एक। क्या बोल रहे हैं? शायद सनी तेरे जैसा प्लेयर है रे। हाँ जो भी था अच्छा था। देख ऐश अपना साइफर को देख। ये T1 गेम बजा दिया लगता है, पीएच का एक्शन पीएच का गेम बज गया। भाई हो गया भाई, अभी मोमेंटम गया समझ। 10 डिग्री सेल्सियस -10 किधर है भाई? वी तू जर्मनी में है क्या? हाउ इज द वेदर इन मुंबई? गर्मी है भाई। मैं कोलकाता से हूं। इफ यू आस्क मी वेदर इन मुंबई इट्स हॉट। मुंबई में अभी भी अरे ठंड है क्या? मुंबई में ठंड होता कब है भाई? वो भी है मतलब हल्का फुल्का सा भी। कुछ भी नहीं है। कोलकाता में तो ठंड है भाई, मैंने सुना। हाँ भाई मैं दिल्ली गया था ना अभी। हाँ तो मैं जिस दिन आ रहा था उसके एक दिन पहले ना 3 डिग्री था मेरे पे उधर। 3 डिग्री था सुबह को। दिल्ली में तो नॉर्थ इंडिया है भाई, होगा ही। जो 40 ना मेरी उधर। चलो बाय राउंड, वाइटल बाय राउंड। 5 मैन बी हो गया लाइन के। I would hope that changes here as they look to push in and try to garner a bit more control on B. The attempt to try and utilize the one way, the other way around. Nats waits for the cross, but they have been pinged already. कितना साइफर के? साइफर को ये क्या कर रहे हैं जॉर्जी? किसी का याद दिला रहा है मेरे को। ऐसा क्यों? अरे गलत टाइम पे अल्टर्न कर दिया उसने। As you try and exit this area into a safer one, you're going to be moving straight into Julio. Still. Shout out दे दो, shout out to you gaming gamer, nice name भाई। गेमिंग गेमर। ऐसा क्या कैमकरन? 1 डिग्री बाबा भाई। अरे भाई ये कौन सा चक्कू है भाई हाथ में उसके? पोलैंड में हुआ। हाँ वो तो ऑफ कोर्स इसके लिए पूछा भाई। क्लियर कट एम डिप भी हो रहा है बे। अटैकिंग में लेना है बेस में वरना डिफिकल्ट होता है। अटैकिंग में है ना? ये अटैकिंग में है ना? ये 50 मेरे को 50-50 मैप लगता है ये हेवन जैसा। हाँ ये तेरे को एंटी बता सकता है, मैं कुछ नहीं बता सकता ये मैप के बारे में। मतलब दोनों तरफ से ही खेल सकते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है। आंटी भाई आप कौन सा चेयर प्रेफर करते हो, एर्गोनॉमिक वाली या फिर वो गेमिंग वाली? भाई मैं गेमिंग चेयर में ही बैठ के आया हूँ, बाकी आदत है उसमें तो आदत नहीं है। तो वैसे वो कैसा रहता है? नील कमल पे खेला है क्या? उससे तो बड़ा हुआ भाई। फ्यूजन मैक्स में स्टूल में खेलते थे हम लोग सनी।
Okay. भाई ये साइफर क्या कर रहा है भाई, ये पागल विगल हो गया है भाई मार रहा है बे उसको। वो भाग गया उधर से। बोले ठीक है मैं चलता हूँ, एक मिला। मैं उसने सही किया एक्चुअली। फाटू का याद उसके लिए दिलाता है। एक मिल गया, ठीक है मैं चलता हूँ। डेल भाई अगर पिक करता ना तो उसको एक पिक मिल जाता आई थिंक उधर पे। Does he risk going for this retake? An op on a retake is not a pretty weapon to use. However, that cosmic Well divide divided. the deterrence for the entirety of Alter Ego here. I'm not a fan of how tight these post-plant positions are here, Kremer. You're right. They're trapped. Yeah, they can just be corralled in here. Even if they win the round, काट they लिया, have to नहीं। fight their way out to ये avoid बच गया। the spike. And now you've got to start thinking about exit strategy. Sure, you may believe that you've हार गए ये राउंड, ये राउंड ना हो मुश्किल है, पाई ये retake। retake मुश्किल है। But a well-placed gravity well, and Georgie just slays everyone who gets in the way. Only Adrian King will remain. ए सुन ना सगनिक, आंटी को बोलना अरे थोड़ा सा मेरे को भी देने। Georgie grabs himself another. चाय? And two players will be able to তাহলে আবার কল করে বল। much worse reaction PH. Honestly, I don't like the thought process. लियो क्या कर रहा है? आंटी को बोल के लेके आया, मतलब सॉरी मतलब मैं जाके उधर ही खाऊंगा, यहाँ पे नहीं खाऊंगा वो। Trapped on site. There's no point going for the retake. You just make it costly for them, and it would have been bloody costly. नेट स्ट्रैप लगा के आगे जा रहा है वर्सेस मार्जिल टरेट लगा के उसके आगे सपोर्ट कर रहा है कौन? मार्जिल के सामने कोई नहीं भाई। मार्जिल ओपी है भाई। जेम्स बॉन्ड हो रहा है क्या इधर? फीफा कतर 2022 एंटी आ जाओ भाई, काश आ सकता हूँ। एस्ट्रो फुल कंट्रोल ले रही है। क्या रुका रहे, देख फ्लैश रिसोर्स डाल के भाई अल्ट मार दिया, फ्लैश कर दिया, दो अल्ट स्टन मार कर दिया, दिया, स्काई पुल सब कर दिया। वो 3 फ्लैश वाला मेटा वापस चाहिए, मजा आता है। अभी फ्लैश अभी रुका दिया, अभी साइड खेलना चाहिए, डबल साइड खेलना चाहिए। मुझे कभी-कभी लगता है एस्ट्रो खेलना बहुत डिफिकल्ट है, मुझे लगता है। एस्ट्रा completely gone quiet. They're hoping to Difficult agent है वो बहुत, मतलब back to B, and it may have worked. मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट कर दूं एक्स्ट्रा। कर दे भाई, एस्ट्रा वैसे भी डुअलिस्ट ही है अभी। स्टार्ट कर रहा हूँ, सॉरी सोच रहा हूँ, सॉरी इसके लगे। फ्लैश पीक, फ्लैश पीक नहीं है, फ्लैश कुत्ता कर दे। बंदूक दिखा के गया, देख कैसे। On this door, 69 HP left for Medeski, but will it be a nice performance is the question. The cosmic divide shall bring down, and now it's time for the battle. It's going to be a bloodbath as everyone begins to ascertain their ड्रेन भाई, gets one, will they find themselves a second? अरे नाइस ड्रेन ट्राई, भाई, नाइस ट्राई ट्राई ड्रेन। The same can be said of RU. Action PH claimed the round. एक्शन पीएच। Patience here, Kremer. Patience and some very clean trades there. In any other circumstance, we could have seen BO 5 है ये? go for this huge हाँ BO5 where he shuts down Oh my every single God. member as they swing into him. But no, they trade one another. They shut down जीत the गए क्या? player. The Sober's got it, relies on the Jet to swing if he wants any hope in clutching out the round. But there's already players holding it. Iman. Really nice spot of teamwork. Really उसका नाम nice क्या spot of ईमान। almost having हाँ। up positions before the spikes even got down there. And it means that for बहुत ईमानदार Alter हो। Ego, their investment now is not great. They go for a heavy stack on B in the hopes to maybe even fight for a bit of control. Yes, Kush does have this Vandal. Yes, there are weapons. But there's nothing in the bank. ए स्प्लिट काट ओह काटा। Good AoE there. It detected Kush. Yes. They are absolutely What? bullying Kush, but still they managed to avoid dying for the moment. Free smoke. अभी हार गए, But they'll be ए साइड पे आ गए ये way लोग। in and close this quickly. A full lineup of 3 people, and here comes the judge. Maybe that's a misaligned. अभी हार गए। ओ भाई, तो टाइमिंग मिस कर दिया इन लोग ने। That's quick. उसका पंची ने जो नशा किया था भाई भाई, क्लोज होने वाला है, मुझे पता था यार, क्लोज होने वाला है। ये असैसिन में करता हूँ, चेंज करता हूँ। One of the things that's a real weakness of the Blaystone was that it's got no penetration, Kremer. So अब वैंडल की डिफॉल्ट स्किन क्यों यूज करते हो रे? नहीं मालूम, ऐसे ही। To be honest, चल स्क्रीन लगा लूंगा नेक्स्ट टूर्नामेंट it's में। hard if you want to be able to get yeah, she penetration just on had them. like had a tricep, you know. You would have to lob it if you want to. Actually, that's another like home experiment I'm gonna try. What's the penetration of a knife? Don't try that at home, by the way. Low AP knives. Yeah. गंदा नहीं लगता यार वो।
is कौन going to लेता on Alter Ego to the fact that Action PH are once again trying to pressure the safe site, and Action PH haven't tried. भाई कौन सा गन यूज कर रहे हैं लड़का? From the Cypher and Sober. डैश अभी सही किया ना मामा. ओ भाई ये स्ट्रेट फिर तो भी बहुत मारा उसने, एम डिप हो गया. अभी कैसा कर वो गन 10 रुपए की था ना इसलिए. सच. एम डिप तो है बट वो स्ट्रेट बहुत ही अच्छा था, फ्लैश के साथ पुल हाँ ना? और हाँ और उसका मतलब कहीं और जा ही नहीं सकता, वो उधर ही रहेगा. लेकिन क्लियर है, उन लोगों ने क्लोज किया था क्या ऑलरेडी? क्लोज नहीं 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 क्लोज शायद से नहीं, कुत्ता आया होगा शायद. हो सकता है. ये देख क्या कर रहे हैं सोवा. दोनों spotted. I think he was. That was great. They're just slowly being encroached on. Like the इंडिया में डबल डुएलिस्ट नहीं खेल पाती मास्टर में. भाई सब रीजन का प्ले स्टाइल अलग है. तुम कोरिया जाके बोलने वाले हो क्या कि तुम लोग ब्रीच की यूज करते हो और मैप में? एवरी रीजन हैज देयर ओन प्ले स्टाइल. यस यस ब्रो यस. अभी क्या पता ये ब्रेक के बाद इंडिया में देखने को मिले. अरे 3 ड्यूलिस्ट देखने को मिले. वो पहले भी मिला था, हम लोग खेलते थे. अरे ये क्या हुआ? ऑलमोस्ट हो गया था कुछ तो. भाई ओ भाई ये बढ़िया था. आंटी को बोलना देने के लिए. You're absolutely right. How on earth? ये शाग्निक को बोलना व्हाट्सएप चेक करना, मैंने उसको डाला था कुछ. ठीक है शाग्निक तेरे को एंटी बोल रहा है तू चेक कर व्हाट्सएप. उसने कुछ लिखा था. हाँ बोला कि देख रहे वो भी गया खाने के लिए, आके देख रहे. ठीक है. How close that came. If they'd missed but a single shot, it's over for Action PH. Alter Ego, they do have the knives available on Jet. They're one away from the Cosmic Divide, one away from the Seekers. There is still Adren diff, bro. available for Action PH. They do still have that ultra advantage. Well, Alter Ego tried 8-4 लग रहे ना रे. so there hasn't really been seen yet. तो Action PH are punishing it with mid. अच्छा मिड लिया लेकिन ये लोग control at that. I love the attempt to control the ult orb here from Alter Ego. They don't want to allow that last little tick towards the lockdown because they know that Kush can't destroy it. ये कैसा रे, ये लोग डुबा रहे थे पूरा. Critical misstep here potentially for Action PH. पंछी आया. 3 सिटी स्पॉन बी साइड रिटेक. The attack is slowly begins to coalesce their way. अभी आया चैट. Once again, this orb is camped. अभी एस्ट्रा के ऊपर है भाई. एस्ट्रा ने इधर अगर एक को भी मार दिया ना तो हो गया खत्म राउंड. ड्रोन आएगा लगता है. अगर ड्रोन नहीं लिया तो नहीं मालूम. नहीं मारेगा ये. अच्छा अल्ट आया ना. एम में मारेगा. अरे नहीं. ओ भाग जा सोवा. भाई सोवा देख भाई, सोवा भी लेके उधर ही खेलूंगा मैं. 2-3 राउंड देख ले उधर ही खेल रहे हैं. अबे ये रे कैसे भाग रहे हैं भाई. मार भी दिया मर गया. ओ तेरी ये क्या राउंड. ईमान भाई ईमान. स्काई ने बचा लिया और कुछ नहीं. It's actually quite respectable. It's about average for a set. एंड एसीए में सबसे ज्यादा कौन सी टीम से खेल के मजा आता है? ब्रेन, पेपर एक्स, इन लोग लाइक बहुत, इनके सामने बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बिकॉज़ ये लोग हर मिस्टेक्स पे पनिश करते हैं. With Alter Ego trying to flank into him here. Something I really want to highlight is the amount of ghosts we see in pistol rounds from both these teams. They really like playing their pistol rounds with pistols rather than with utility. The only one who holds on to any form of utility. किसको भर रहा है रेक्स बाजू में पक खेलते. The odd's bit of info, भाई but other than that, वो तो उसका उसका है. हाँ. With Alter Ego stacked up outside B. Yeah, of course. Yeah, it helps, sure, but I don't like the lack of utility. Julio. Mid to be. This could very well catch Tesseract off guard. ओ भाई आधा बुलेट इधर ही गया एचपी भी. वाइटल प्लेयर डाउन. थ्रो बोल दे. मारेगा ये. ये डेल्ब से डब्ल्यू दबाता है बे. जेट ने क्या किया था? डैश विश मार के आ गया मुंह पे. क्या मालूम वही देख. गया. हो गया.
And Emon got a 4K last time, but will it be viable here? Delve tries to close for distance, and while Kush may fall, the frenzy gets its way. पिक्चर आ गया. Best team you have played against? I think for me it's Pro 100. Russian team था वो लैंड पे हम लोग JMAC में. Starts to this map, but since then, especially in the latter stages of that first half, we've been seeing a massive comeuppance from Eman. Even in the pistol round there, even if he aggresses. Yes, yeah, me now I am in Kolkata. आज ही आया सुबह. कैसा लगा पूरी? अच्छा था पूरी. बीच में गया था क्या? ठंडी है ना? हाँ ठंड तो है उधर पे बहुत. अरे W mid to B, let's go. इनका एक्स्ट्रा थोड़ा डाउन लग रहा है मुझे, पता है एपी का ना. हाँ. अगर वो स्टेप अप किया तो जी बाय हो गया बे. अब तो गया, मुझे नहीं लग रहा. He is more than that. Shagni नॉट कोलकाता कोথায় डिसाइड करी नहीं. आई एम गोइंग थ्रू ऑल द डीएम्स इंस्टाग्राम में, उसके बाद डिसाइड कर देंगे. जी को Teabag and body. जी को क्या मोड इंडिविजुअली खेलना चाहिए भाई? ये मैं कैसे, अगर मैं जी का कोच बना तो मैं बोल सकता हूँ. अभी कैसे बोल सकता हूँ? But against the rifles, if they win this, GPH are in a lot of trouble. Must win. Fraction PH. Okay, Rohit Kumar dash. Das, thank you. Dash. I mean thank you. इसमें भी dash इसका रे. दो कुत्ता इधर मीटिंग करते हुए. ओ शॉट. ओ भाई कुछ भी भाई, ये रन गन था. कुछ भी तेरा बात सुन लिया एस्टा ने. मारा बे. ये अजीब सा गेम है यार. वो W दबा के W उसने मारा, उसको लगा हेडशॉट. भाई ये बराबर खेला बे. That it is, however, it's just a bonus of Alter Ego. They want this round over and done with anyway, hence the faster play. And now they bring out their full buy. This is where we see. Okay, Assassin Gaming, मेरे को लिख दे इंस्टा डीएम पे लिख दे, देखता हूँ. भाई हेड डी लगता है बे डॉट क्रॉसर में. डॉट में एक बात तो है टीबोन की अगर हेड लगता है तो हेड लगता है, अगर तू स्प्रे मारता है तो वो कभी कभी ऐसा होता है कि ना हेड लगता है ना कुछ लगता है. पकड़ लिया हाँ. रोहित शर्मा पकड़ लिया तुम लोग ने. ब्रेन स्पोर्ट्स अभी टीएस एंड एमबीएस देयर टीम सीक्रेट. ये देख एड्रे नहीं मार रहे बे. अगड़े शे में भाई. क्या है बे हगड़ेश? Shoulder peeking in mid, hoping to harass the odd player, but for the most part, it's all info gather. भाई भी है क्या बूट कैंप में? नहीं अभी नहीं है, उसका 7 दिन का क्वारंटीन है. रेक्सी है क्या उधर? रेक्सी है बाजू में. ओ वही भी आ गया इंडिया. आ गया. ओ तेरी, अगले साल सब लोग कोच ले रहे बे. सब अभी टाइम है टीबोन, आ जा. नहीं यार, हम इधर ही कुछ आवाज पार्टी. क्या बंदा है. हम इधर ही बज लेंगे बस, और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी. 30 हो गया रे बाबा. काहे का कोच. कैसे रेक्ट ने मार दिया. जमीन के अंदर फ्लैश फोड़ेगा ये लगता है. Boys, we gotta go grab the objective. Look what Aiden King is. This is such a deep angle to hold. Does Georgie clear this? If Georgie clears this, this could be one of the most important gunfights of the season. अरे पिक्चर ले रहा था वो. Wins it. Action PH. This is how they start to close that gap. And it's actually a change over here to try and attack B, but you know that the Killjoy is still here. It's Shot. going to be a large risk. जॉर्जी भाई. Nowhere else to go, because everywhere else is owned by Georgie. This is his jungle. Oh, and he's the king, baby. जॉर्जी भाई जाग गए. He needs to make sure that the rule of dog eat dog stays very much alive. Georgie, what an angel. Bear in mind, he's taking that against Agent King. टीबोन कोच आ गया तो नेक्स्ट ईयर वीसीटी वीएलटी जीत जाएगा. जीत गए बे भाई सवाल है क्या ये थोड़ी.
huge kills to accomplish, meaning the Sentinels, what they do push into B, there's only so much they can do. कितनी अपॉर्चुनिटी है बे इसमें वैलोरेंट में सारा CS:GO में हार्डली एक दो सच रे हर हफ्ते एक एक टूर्नामेंट इधर हाँ ना अभी देख अभी ये खत्म भी नहीं हुआ और वो और एक कोई रेडीमेड इवेंट बे आ गया एक खत्म होते टीसी खत्म होते दूसरा शुरू होता है अभी जोटा कैप होगा $15,000 प्राइस फुल वो ऐसी है या ऐसे ओ भाई पूरा ऐसे दोनों नाइस अभी इधर देखो क्या चल रहा है 4v5 से हो गया अरे 3v4 This could now be very dire for the members of Action PH. They need to recover this and quickly. Losing the Owl drone as well means that you don't know how many players. Hello Rhino, welcome to the stream. I remember a couple of these players don't really have to worry about dying to the spike. They're not worried about dying with frenzies, boys. Tesseract's going to see the first. That's damage done here. But now it's down to only a couple of players. मार दे रे Sheriff can't do too much. But Kush is playing it well. They've actually been forced to move away from this. उसको हवा में देखते ही हो गया हो गया उसका इसका Should be fine. Careful. 0.7 seconds. Wasn't worried for a second, mate. comeback is clear boys You would have a chance to be worried for a second, Harry. You got him 0.7 of it. Wasn't worried for half a second, mate. As Alter Ego, they make that closer than it should have been. The spike plant is absolutely going to help them financially because when you do have games that are this close, it all becomes a war of attrition. That's all it becomes. And DM the I have texted you check okay session game okay done divide 2 away from the ping on Nats. Over on to Action PH, they're 1 away from 3 of these ults, 2 away from the lockdown. This is where Action PH have the best setup they could possibly have for retakes, and that really is going to emphasize to Alter Ego that they need to either make this one-sided in aim, in kills, or when it comes to the retake, they could be in a lot of trouble. देखा नेट्स का डिफॉल्ट देखा एक्टिव है बहुत Half HP now. It's actually starting to push up even more here. Very cheeky, but look at the angle here of Timmy. Majeski wants to try and take the swing, perhaps. This is risky from Action PH. I am from Silchar Assam bro See attention of multiple players here. And may take away some focus from mid, where it's going to be down to this guy of Iman to try and win a 1 versus 2 potentially. The bird won't last for long, but hey, you got your info, right? Someone's here. नेट्स ने पूरा निकलवा दिया देख Led over to be so much और ये घुस गया ओ भाई मैं बोला ना ये क्लोज जाने वाला है मेरा वो था Sky's gone. How do they get there? Tesseract to just क्या बॉल से भाई ये साइफर का सीधा घुस रहा है a little bit interesting. Out come the Seekers. They will reveal the location, though, of Adrian King, because, you know what, those came from B-side, boys. Interesting. क्या बोल रहा है कास्टर बी साइड से मारा है उसने एड्रन किंग यस असिन मेरे भाई यस करते हैं एनालिसिस करते हैं एंड द गैम्बिट और लिक्विड दोनों ही अच्छे टीम है winnable now. Aggression is planned by Alter Ego. Can it be stopped? ओह टेल भाई इसको देख के भाई क्या बताऊं इसको देख के मेरे को एक ही बंदा याद आ रहा है वो है मैं Rifle. It's not the cleanest disengagement, but Delby still makes it work, baby. Julio refuses to give ओह माय गॉड और इसको देख के मेरा याद आ रहा है एस्ट्रा को Oh my goodness. What a choke. I'm sorry, but our observers have doomed you, Julio Leo. That's going on a highlight. एक सेकंड गाइस एक फोन आ रहा है फोन उठा के आया मैं एक सेकंड The O's in the name stand for 0% accuracy. Usually, there's a great term, accuracy via quantity of fire. The idea being if you shoot enough bullets, eventually they'll be accurate. There's an exception. सही है ध्रुवल Oh, That was unadulterated panic. that was pure. बिग अरे आर्यमान वेलकम टू द स्ट्रीम बिग फैन वेलकम ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम गाइस आर्यमान इन द चैट Doesn't matter how messy it is, doesn't matter how much effort work for it. They win the round, and once again, they're looking to push into mid to not only beat Action What's PH up, Aryaman? this round, but beat their economy. There's ults available. There's ults available. Action PH, they have no excuse for losing this. It's laboured. Tesseract gets a pair somehow. And Georgie's still alive over here. Julio. Yeah, they ain't peeking that one again. आर्यमान बॉस हाँ ना भाई बॉस आ गए अभी स्ट्रीम पे डायरेक्ट And Adrian King
suffers from a little bit of aim kick there from you hitting the first shots. Julio in a 1 versus 3 up against the operator. I think Oh my God, 10-9. big shot from Georgie. Got you again, son. Action PH now, only one away from equalizer with Alter Ego. Harry, we have a game in our hands. I need to emphasize this more. If this goes to Fracture and I am real Ariman. and Alter Ego have a 2-0 map lead, then they win Fracture. Just period. If we see AK Racing का chair है भाई. then Fracture then goes up in the air. I predicted at the start of this series it would be a 3-1, regardless of who takes that 3. Vertek is real Ariman, not me. Yes, yes, guys. Fracture is. However, Ariman Vertek is real Ariman. ये was Ariman Vasan, not real. Boys, जो लोग को नहीं मालूम, Ariman Vasan is the owner of Enigma. इस मतलब हम लोग का boss. In short. We're going to be going up against an operator here from Georgia that's placed itself up on top of the wall. An attempt to stop this as it moves on through, but Medeski is going to be the one who's the stopgap this time. ओ भाई 2-2 ट्रेड भाई खत्म. भाई जॉर्जी ओपन अप हो गया. मारो यार अल्टर को जल्दी 3-0 करेंगे. आ गया भाई, आ गया, मैं आ गया. Harry, knock open up the door, it's real. We've got Georgie, he's home. Daddy's angry. What a round by him there. 10-10 the score line, and with a timeout called, I love the fact we're seeing timeouts now, because they still haven't expended those ults. For Alter Ego, they're about to hit a power spike. You shall live together, yes. कोच भैया बात कर रहे हैं अभी. कोच भैया बोल रहे हैं. हो गया. ये एसएन मैप पे कमबैक्स होते हैं रे. अरे बहुत बीटी मैप है. हाँ, ये एसएन मैप में एक्चुअली कमबैक होता है बहुत. लाइक स्कोर कुछ याद आते हैं. हाँ हाँ. और ऑपर ही मारता है. भी हो तो भी चलेगा. वही डैमेज. लेकिन मैं एक दिल से बात बोलूं क्या एंडी? बोलना. कुछ अलग लेवल चल रहा है बे एनिग्मा का. मैं देख रहा हूँ आज. थैंक यू भाई. मतलब अच्छा वे में बुरे वे में. सच बता रहा हूँ. मतलब तुम लोग जैसे खेलते हो ना कुछ अलग लेवल बना रहे हो. मैं देख रहा हूँ. थैंक यू भाई. भाई बस मैं देख रहा हूँ सारे कॉम सही चल रहा है. सारे सब कुछ सही चल रहा है मुझे लग रहा है. टच वुड. सही है. ऑल द बेस्ट यार. थैंक यू. ये हाईलाइट पे जाएगा मेरा. लेट्स गो बिंग्स भैया. बिंग्स भैया सुन लो. बिंग्स भैया तुम सुन लो ये. ठीक है. एक मैंने दिया एक तूने दिया. ठीक है. हाँ चलेगा. नाइस. बिंग्स भैया जलते रहे. क्या बोलने का भी. बिंग्स भैया का है. नहीं ये हाईलाइट जाएगा तो बिंग्स भैया को टैग करूंगा. साला. Where Alter Ego are going to try and use these ults. This cosmic divide is something that we've seen both Astros hold AK Racing के चेज अच्छे बहुत अच्छे हैं भाई. period of time. I want to see them drop now just so they have a chance to use another one. उसमें स्मोक डालने का अपड्राफ्ट करके जाने का उधर. भाई बराबर है. मस्त ब्रेन्स डाल. देखो दोस्तों VCC 2022 VLT जीतेगा अगर ये सब कोच का आया इनपुट. अरे तो अगले साल से वो चेंबूर आएगा ना. अगले टूर्नामेंट जो भी तुम लोग खेलोगे. हाँ ये वो मजा आएगा देखते. एंटी रियान और हेवन वाला ट्रायो भाई सब अपने अपने लाइफ में थोड़ा बिजी है. ओ भाई क्या बीटी है यार ये स्काई की फ्लैश. फ्लैश चल रहा है बस और कुछ नहीं. ले लिया बे इसने. 3v3 देखते हैं मसला क्या है. क्या लगता है. नेट्स भाई थ्रो कर दिया लगता है मेरे को. लग तो वही रहा है. नेट्स भाई नहीं बाबा. नथु मार दिया बे लड़के ने. ये लो है गया. ये राउंड गया मुझे लग रहा है. एस्ट्रा ने बहुत अच्छा खेला. उसके बाद पुल रहेगा एक. बट एस्ट्रा डिटेन हो गया. ओ तेरी. हो गया अब जीत गया. हाफ हो गया. अभी पुल भी है. अब तो नहीं होगा ना. अब वो करते रहेगा फ्लैश. ऑफ बाबा. Oh भाई. That's Adrian King for you. That's Adrian King for everyone in the chat. Do you know 6-man lineup of Enigma? भाई कितने साल का है बे. 6-man lineup भाई. एड्रियन किंग कितने साल का है.
तो Young young है, कितना young है, लड़का है? young है। क्या कौन हाल है आया? बेटे तेरी भैंस की टैट? ये आ गया। ये फाटू का आवाज कहाँ से आ रहा है? फाटू का आवाज आया यार। इन गेम मैं हम खेल रहा हूँ लोग एड्रेन की हम आईडी से। कीबोर्ड तू मेरे को स्पेक्टेट कर रहा है? क्या ए, जॉब मारा फाटू तेरे को तूने? याद है एड्रियन किंग? फाटू हाँ, तेरे को याद है एड्रियन किंग वो सीएसगो वाला? वो हाँ। ही है बे। क्या मार रहे इधर भी? अबे बुड्ढा है क्या? मैं तो बुड्ढा हो गया। नहीं क्या young है। बुड्ढा हो गया वो उधर टाइम वो यंग है बे, मुझे भी वही लगा कोई नहीं, बुड्ढा एक्चुअली होगा। एड्रियन किंग का एज बहुत है रे, मैं जहाँ तक सुना, पर उसको वो देख के लगता नहीं है, हाँ क्या? बिल्कुल फाटू की तरह। भाई क्या हाल है दोस्तों? क्या हाल है, क्या हाल है? भाई? ऐसा नहीं, और क्या हाल है जाबरजा। आंटी? भाई बढ़िया ये भाई, फाटू, बढ़िया। ये फाटू घर पे बैठा है क्या? ऑब्वियसली और कहा होगा। अबे चूतिया है क्या भाई? हम भाई आप बैठे हुए हम चूते हैं यहाँ पे। वो देख लो पीछे चल गया। ये कहाँ से आया? मेरे घर में बैठा है। बैठे हुए यहाँ पे। आ नहीं रहे हो? मुझे तो मम्मी के साथ था। मेरे घर में बैठा है। डियाब्लो तेरी डियाब्लो ही था उसकी मम्मी है लो। फाटू घर पे बैठा अबे है, रुचि एक घंटा तू तो बैठा तेरे मम्मी के साथ था। मैं जा रहा वापस होटल। समझ में नहीं कहाँ आ से रहा। आया मेरे को भी यार? क्या सीन चल रहा ये है? मम्मी के साथ आप भी अभी रील्स डाला बे। हाँ, वही तो वही तो। वही टीवर कह तो। रहा मम्मी के साथ था, अभी तो रील डाली है। आ बे। अबे मैं फोन से हूँ बे, गाड़ी में हूँ। लौड़े का गाड़ी है घर में। लोड़ेगा का। एक शब्द नहीं आ रहा है उधर। अरे इधर ही हूँ। गाड़ी में हूँ भाई, गाड़ी में हूँ। ठीक है, हॉर्न बजा। हॉर्न बजाओ। हाँ अब बजा। टीबोन के बाकी चुट, टीबोन के बाकी चुट। घर पे बैठा है। ठीक है, ठीक है। बजा। घर पे- ये एक घंटे ट्रक से वाले ने बैठा हॉर्न लगा रखा है ये। माँ की आँख, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। जा रहा हूँ टीबोन के बाकी चुट। अरे चल भाई। गया। हॉर्न बजा। ये घर में क्लियर कट ये वॉइस माइक्स है। अबे यही चेक किसी ट्रक वाले ने लगा रखी है ये। मैं फिर से बोलूं, ए ट्रक वाले हॉर्न बजाइए जरा। टीबोन के बाकी चुट, टीबोन के बाकी चुट। What is his behavior मेरे यार? चल गया, मैं घर जा रहा हूँ फाटू। मार कह रहा मैं रहे हैं। शांगरीला जा रहा हूँ वापस भाई। हो गया भाई, वो 11 जाएगा ही नहीं, 100% ले लो, जाएगा ही नहीं। पूछ क्यों? क्या फाटो भाई, एक दिन स्ट्रीम एक दिन पार्टी, यही लाइफ है क्या अभी? हाँ। Hey, what is your full-time job? I'm a party freak and I'm a gamer. भाई पार्टी भाई, एक दिन फुल लंबी स्ट्रीम 10 घंटे की, दूसरे दिन पार्टी। प्रोग्राम कैंसिल करवा रहा मैं। ये होता है सक्सेस, समझ रहे हो? बोलते रहो सुनाई दे रहा है। अब मैं बोल रहा फाटू भैया, मैं Success गुरुग्राम तो- कैंसिल करवा रहा, कैंसल करवा रहा। बैठे रहो, मैं क्या कह रहा हूँ? कैंसिल करवा रहा मैं। इसको डियाब्लो नहीं है, मैं कैंसिल करवा रहा गुरुग्राम। बैठे रहो। क्या कैंसिल कर रहा है? हेलो, तेरी मम्मी ये को क्यों फोन रो रहा है लगाऊंगा। रुचिर? ये आ ही नहीं रहा मेरे को। क्या हो मेरे गया को- बेटे? रुक जा नाइट बेटे। इज यंग। ये नाइट वाला बंदा है। 8 बजे कोई और लेना था ये। अबे नहीं, काम से जाना है। मैं जा रहा हूँ, चलती है टीवो। चलो भाई, तो बाय तू बाय खेलेगा नहीं आज? आऊंगा रात को। लौड़ा है कभी। आऊंगा। कल भी यही बोला था, लिख आऊंगा। के ले लो, लिख के ले लो। नहीं आएगी। आज नहीं, आज कैंसिल इसका स्ट्रीम। मूव कर दिया मैंने इसे। ओ चल मैं जा रहा हूँ, बाय। चलो भाई। बाय बाय। टीबोन हाँ, हो गया बे। वाह भाई मुझे को देखो, मुझे हमारे फाटू प्लेयर्स ने- को देखो। अच्छा नहीं डाला लिंक डाला। मैं एजेंट्स देख के बताता हूँ कभी कभी। चलो चलो करो 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 खेलो। ओ भाई, ओटे हो गया। अब मुझे लग रहा है आल्ट जीतेगा। टीबोन तेरा प्रेडिक्शन सही है रे, क्लोज। ओटी यार एजेंट्स देख के मैं डिसाइड करता हूँ यार। Hey OG, what's up? Welcome to stream. OT. कविश, वेलकम भाई। क्या हाल है कविश? बहुत टाइम बाद। वेलकम टू स्ट्रीम ब्रो। इसका नाम दिया हुआ है नीचे, और जो कोच का सिर्फ लिखा है कोच। इसका नाम नहीं लिखा है। कोच। सच रे, कोच। कोच, उसका नाम नहीं, उसका नाम ही कोच है। जॉर्जी भाई ने भाई, अरे वो लास्ट मैप में मारा नहीं था, यहाँ पे 28 मार के बैठा है। और नेट्स भैया भी थोड़ा थ्रो कर रहे हैं भाई। डेल भाई तो सीधा डब्ल्यू दबा रहे थे बाबा। ओ भाई, नाइस शॉट। ऐसा गेम चाहिए रे, वरना मजा नहीं आता, पता है। शॉट भाई। जेडी हो गए इधर।
2 एमएन 1 बी के बाहर 3 स्पॉटेड in A main, and this should allow for at least a safe claim of the ultimate orb. But it seems like for now they're not. ये क्या एम रखा है इसने heavily in that. अब से It's a shallow default on the side of B. And a cursory couple of taps over on A. ये देख अरे हेरन प्रेस्टन Takes out Adrian King. And as far as frags go, that's one of the most valuable. Julio Leo For now. हुलियो लियो नो ज़ेरेफ अभी तक कुछ आया नहीं अपडेट ब्रो आप लोग ये टीम के साथ खेले हो कभी यस इनसे टीम के साथ हारे हम लोग ये टूर्नामेंट में who will play Kaio in Enigma let's see big fan sir thank you Anamika अरे oh my god हो गया ओपी रिकॉर्ड oh बोलते my god हो गया नेक्स्ट राउंड जीत गए how is the YB bromance going अभी looking forward to अभी टैग होएगा अभी खाओ टैग नहीं हुआ हाँ, हो गया। हुआ भाई नहीं लगता इसमें वो नहीं बाबा कर ले थ्रो कर ले साइफर नहीं YB बाबा bromance ऐसा कुछ अबे नहीं बहुत डिफिकल्ट है यार ये good to have him back रीटेक नहीं OG. मतलब उसको लैंड करना भाई नहीं ये करने वाला है थ्रो अभी हाँ ये बेबी नो थ्रो मार दिया नट्स भैया अब क्या होगा मुझे लग रहा है जीतेंगे बे इसका ये पिक बहुत इंपॉर्टेंट था यार क्या बॉल से पिक था बे उसने सामने वाला जेट भी डुबाया हाँ ओ भाई रिकॉन देख कुंडली निकाल दिया पूरा CS:GO OT और Valo OT which is better CS:GO में ज्यादा राउंड्स थे रे OT में हाँ जब वो तरह अरे CS:GO में कैसा था कि 1 राउंड हारे 2 राउंड हारे चलो चांस है इसमें 1 राउंड हारे फिर हो जाते हैं फिर हल्का सा नो प्रॉब्लम डेथ ब्रेकर अभी 5-6 दिन में कहाँ ट्रेवल किया फर्स्ट आई केम टू कोलकाता देन दिल्ली देन पुरी देन कोलकाता आ जाया T1 क्या चाहिए 3-0 ऑब्वियसली मेरे को वो भी देखना है वीएल टेक 5:30 से है ना वो हाँ अगर हुआ तो अच्छा वरना दूसरे टैब में डाल देंगे They now go into a chance to close out the map and snatch it from Action PH despite भाई आर्यमन लीक्स दे रहा है रे इधर कैसे वो देख रहा है हाँ मतलब कौन से लिस्ट नहीं दूसरा ही मेरे चैट में अलग ही चालू है कुछ Why everybody calls you Sunny? Cause my nickname is Sunny. Adrian King on the lurk, but it might be rewarded with additional attention over here on A. The second you see this sky, you might get a Now destroyed. so careful here backside. He hears his alarm bot go off. He knows that alter ego are in mid. And now they're looking to भाई press. सही है यार मिड में क्या कंट्रोल लेता है ड्रोन लेके सीधा ये ड्रोन कहाँ से कर रहा है उसके बुंड कौन बचा रहा है अरे माँ ओके जीत गया अरे भाई डेल कंग्रेट्स हो गया भाई जीत गए बहुत रोएंगे आज रात को इन लोग एक्शन वाले हेलो प्रज्वल बनते व्हाट्सअप क्या बनते एनी जेट टिप्स आई क्या ही बोलना है बी अनप्रेडिक्टेबल बी एग्रेसिव फंसेगा इधर 1 2 हो गया भाई जी जी वेल प्लेड बोला ना क्लोज तो था 2-0 क्लोज था भाई क्लोज तो था क्या चिल्लिंग कर रहा है लड़का साइफर में उनका चलो गाइस आज के लिए इतना ही था ए गाइस निकल रहा हूँ मैं यहाँ चल सनी चल टीबोन चल एंटी बाय बाय मिलते हैं बाय टेक केयर थैंक यू चलो बाय 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 ये क्या हंस रहा है कुछ भैया खुश हो गए कुछ भाई खुश है मैं हाँ ना
अब अगले गेम का भी प्रेडिक्शन मैं देता हूँ, देख। लाइनअप देख के क्या? लाइनअप देख के प्रेडिक्शन देता हूँ मैं। तीसरा मैप कौन सा है? क्या मालूम, मैंने मैप देखा ही नहीं. Yeah, they absolutely do. That is an insane performance from both Kush and from Delby as well. You need to remember, that whole round opened up with Delby hitting an insane flick. Yes, Kush's info was good, but it's only as good Fracture, as oh god. Luckily for him, Alter Ego, they have the firepower, they have the oomph to be able to get behind that info and kill every single player who is spotted out, who is zoned, who is revealed. Delby, the hero, play through mid to end 24th Park Street atmosphere means of course bro. He for me is probably going to end up being MVP. नेक्स्ट टूर्नामेंट कब से स्टार्ट है? 10 तारीख तक ब्रेक है, उसके बाद जो भी टूर्नामेंट है खेलेंगे. म्यूटेड? क्या म्यूटेड? फुल पोकर प्लेयर है टीम. टिबोन बिस्किट खा के आया. ठीक है. बराबर. हिक्का. गाइस 2 मिनट में आ रहा हूँ. 2 मिनट में आता हूँ मैं, ठीक है? Stay. Probably Georgie and Delby, but I cannot begin to overemphasize just how good Kush is that game. His ACS isn't anywhere near as high as it should be. If the impact of those recon darts had any way to be shown, he has revealed himself to be one of the best Sovas in the entire South Asian and Southeast Asian region. He is so good, Harry. Adrian King as well, and Iman, like, there's no surprise that it's the duelists and initiators at the top, right? Like, these guys are doing their job incredibly well. It was a little bit of a quieter game from Nats and Medeski, but that's to be expected on a Cent where either you are an unbreakable Sentinel or you are fairly breakable. And it felt like it was a lot more post-plant play than it was stopping plants in the first place. Yeah, you're absolutely right. For me, I really, really want to see what Adrian King can do moving on to this next map, because Adrian King, he started with a immortal performance. I think it was 17 kills, about 5 rounds in. He really, really showed up. Yes, he slowed down, but as he took his foot off the gas, Delby came in and he just put it straight into the footwell. Like, he really, really was able to deliver. And honestly, I'm just so impressed from Alter Ego there. That really has given me the confidence to think that for Fracture as well. Bear in mind that Fracture is such an important map when it comes to info. That Kush has got him covered. Let's take a look at some of the highlights though, Harry. Let's see just what was able to allow Alter Ego to carve their way to victory. Alright, fanboy time. Man, so much value you can get from the Cypher as well on these pistol rounds, because every smoke becomes a one-way when you're pinged, right? Yeah, absolutely. And it really sort of set the precedent for how aggressive things were going to get. I think neither team really was intending on taking this one slowly. Both of these teams are characterized by aggression and trying to set the tempo and try and outdo each other as fast as possible. Yeah. And to be fair, I think Action PH, they had a pretty solid attacking up, especially when it came to attacking B. They took that site really well every single time, just sometimes the post plants didn't work out. You're absolutely right. With Action PH, it feels like they have that same circumstance that they had on Splits, where if they go kind of 3-4 rounds down at half time, they really struggle to make up for that in the second half, because they just go blow for blow rather than being able to get these large sprees of momentum, which is what Alter Ego appears to excel at. To their best, and man, Adrian King, I didn't know too much of what to expect coming into this matchup. I expected him to be good, but coming in from yesterday, like, the story was always going to be Iman, right? Like, they had such a standout performance yesterday that it's like, can you somehow compare to the power presented by that Sky? And I love seeing our initiators being able to garner so much info, and the cover here from Delby,
The way that Alter Ego trust each other is one of the reasons why their team play is so strong. Yeah, you're absolutely right. You're absolutely right. And honestly, with both teams, they had some really great spouts of teamwork. We see here particularly, those Seekers go out, it allows Eman and Tesseract to swing onto the double stack of players they already know about from the previous Recon Arrow. So I'm really impressed. Both sides played very well, but it's just Kush, man. It's just Kush all the time. Those final 2 rounds, it wasn't even him popping off. It was him throwing some masterful, absolutely masterful recon darts. It was a supportive pop. It was a supportive pop, yes. And actually, PH, here's the thing for Tesseract. He didn't play badly. This wasn't a bad game for Tesseract at all. But it's just, he just unfortunately happened to go up against Kush. Like, that was just his downfall. You know, he has to try and beat Kush, who is really, really feeling it. I think that at least there are some silver linings here, and that Georgie appears to have come awake. Unfortunately, I don't think Georgie got a single kill in overtime, because they're the one who took the early play against Delb on the attack, and obviously got broken down in B main, which is kind of weird actually, because Georgie's abused that angle before to try and take out, I believe in our last round of regulation, to take out Nats through the cyber cage. And the same play sort of got hoisted upon him. You're absolutely right. We'll see what can be done from Georgie moving into this night onto Fracture, because Georgie, while he did do very well this game, it took him about kind of most of the first half to warm up. It was in the second half he just exploded. And it's like a volcano, isn't it? Like, you get the tremors, you get the warning signs, you get the scientists going ballistic. Replay, why have you done this to Julio? Oh, also, you get to watch Julio, poor man as well. Like, that's just, we've just witnessed a murder. There, you got the scientists sort of panicking about the volcano, and then it actually erupts, and you think, oh god, despite all the warnings you get, it's Georgie. Replay ops were like, you know what, I want to frag as well. Let me yeah, I know, there's not a single point of mercy is being shown by Snowboy. Like, I think Snowboy's our observer for today as well, so he really is just worrying this, isn't he? Yeah, thank you to all of our production partners over at the Esports Club, by the way, and of course the other casters who've helped to bring you all the action from the Esports Club Challenger Series. We've been working real hard for the last week or so to show you some amazing games between Southeast Asian and Asian talent. Look at Georgie here. This is amazing map awareness to be just on the edge of that recon arrow. Every time it pinged, I kind of seized up a little bit like, it's so close to touching his toes. It was, bear in mind, Eman as well. He had a great game, but I think for Eman, we sort of expect him to do well now. He's kind of like, he's dropped 30. Yeah, that's just Demon things. Just let him do his thing, you know? It is what it is. Not 40. Pathetic. You disgust me. आ गया bad game for Eman. He's looking really shaky today. पूरा final करेगा watch party. Yes, suck it. 1v5. Getting rid of Georgie there. That could have been the whole map. Oh my god. That's disgusting reconnaissance. Yeah. And I love the time play here as well from the pair of remaining players of AE. Real cerebral, and here's Delb on the nasty flick. Yeah. Oh, yeah, absolutely. That's a demoralizing way to lose a round. Kush on the flank and the lurk. It's not often you see the server on the lurk because we're often so integral to leg day. On the side itself. बहुत बाप नाम है. No, yeah, absolutely right. We're going to go to a quick 5-10 minute break. When we return, though, we're going to be seeing our third map of Fracture. Hopefully it's not a final one, but I tell you what, Harry, Alter Ego are looking pretty good. Action PH, they need Georgie to be able to deliver. We'll see if do just that in just a moment. Hey guys, this is Raka and welcome to the streamer review. Raka. Gaming streamers gonna review the best new gaming laptops in the market, and today we are looking at the Intel-powered Asus ROG Zephyrus S17, a laptop which stands for its amazing multitasking. Maybe VCC होगा. हाँ, VCC का dates announce नहीं हुआ है, but probably VCC तो है. मेरा ब्लूटूथ से कनेक्ट हो रहा है तो आवाज ध्रुव समझा. Is Nico best CS:GO rifle player? ऐसा नहीं है. There are a lot of other players. I used to like a lot of riflers. Nico is one of them. I think Device, Dupree is good. Used to be. अभी तो उतना CS:GO follow नहीं करता. Cold Zera was good.
Olof Meister. For a laptop, I also एक काम करता हूँ इधर ही डाल देता हूँ डिस्प्ले पे ही डाल देता हूँ. is very sorted in this regard. This one port lets me connect to all my 10 मिनट का ब्रेक है रे. thanks to its blazing fast bandwidth speed up to 40 Gbps. Overall, I think the Asus Zephyrus S17 is a great laptop for streamers, gamers, or anyone with the similar needs. So what are you waiting for? Bring yours home today. रुक जाओ. तुम लोग एक ऐसे ही राउंड बताता हूँ. एक क्लिप बताता हूँ. चलो. Hi guys, this is Zaya and welcome Zaya. to Streamer Reviews. Where I'll show you some clips. Okay. आ जाओ. There's some CSGO days. CSGO days were fun, bro. We miss VLT Antidote. Thank you, thank you. I miss VLT Antidote as well. Hello, sir. Hello. क्या? No 1230 Gaming. ये देखो एक क्लिप था. ठीक है. Recon. वाइपर स्मोक है मिड पे. ऑल अप एरिया में. Watching well, okay. ड्रोन गया. मैंने तोड़ रहा हूँ. तोड़ दिया. One side, two side. Tantana. 1, 2. One more. 3, 4. Jail. We'll tell you this to diff SK Rossi with op. Only anti can diff Rossi 1-on-1. क्या मालूम भाई, क्या मालूम. Some clips और clips है तो बताता हूँ. सेकंड इंटरमिशन क्लिप्स में जाओ. पूरा दिखा नहीं सकता ना, थोड़े स्टैट बुक भी रहता है उसके अंदर. ये क्लिप है. ये क्लिप देख लो. ये क्लिप देख लो. नो कैम. One outside B. Two guys outside B. Get mid guys. Woo! Last guy outside B. Crisp. गन ले लो. 4K एंटी इमेजिन बियर इज चीपर देन मिनरल वाटर इन पोलैंड. भाई क्या कर सकते हैं. ब्लैक वैंडल इम्बॉट और व्हाट. लिखता हूँ और क्लिप्स है तो. ये कौन सा क्लिप है. हाँ ये एक क्लिप है. ये एक और क्लिप है दोस्तों. Is there any
This is a eco round 1v4. There is one more trap on lane. Yeah, one trap on lane and one mark. 30 seconds left. He has no flashes. They got flash. One B mid. Two bullets. एशियन टीम्स के साथ स्क्रीम है. One enemy remaining. Woo! Nice. और कुछ है क्या? बताओ. हाँ, कौन सा बेस्ट क्लिप है तुम बताओ. ये कौन सा है? Nice buddy. Pulling. I'm taking the op. ये नहीं है. I think they will come. ये नहीं है. ना. ये कुछ रहेगा. इसका तो. मैं अगर ओके. कहाँ लगाया? सिटी. ए शॉट लेफ्ट. ओ ये टीआर के साथ पिस्टल राउंड बताता हूँ. एक्सोगेंस कमबैक. कंपोजर था टीम के अंदर. भले ही हम लोग डाउन थे बट सोचे नहीं कि अंटिल 13 राउंड्स कंप्लीट होता है तब तक तो मैच नहीं हारते. तो कंपोजर रहना बहुत ज़रूरी है. सो वो था तो इसके लिए हम लोग कमबैक कर सके. मेंटल स्ट्रेंथ वाज गुड. ये एक राउंड था. आई थिंक ये पिस्टल राउंड है अगेंस्ट ट्रू रिपर्स. हाँ कर सीधा वॉक किया मैंने. ये लॉन्ग का स्टार लगाया. एक ही ट्रिप होगा तेरे सामने ट्रिप होगा. सिटी. ए शॉट लेफ्ट साइड. इजी. बेस्ट एस्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है रे. और नहीं है. चालू है क्या मैच? नहीं बात कर रहे. ठीक है तब तक क्लिप्स बताते रहता हूँ. ये क्या है? ओ ये VLT वाला है. आई लेफ्ट मिड. ये VLT के अगेंस्ट है क्लिप. I'll fight B. I'll leave. I left. Yeah. I'll fight B. I'll leave. I left mid. किधर है रफील? चलो बाय बाय ऋषि. हैप्पी न्यू ईयर. एक मिनट आने वाला. You will not kill my ally. I have mid. Yes. Come on. Keep watching. One more. Placing swarm grenade. Swarm grenade. Can come mid now. Dead. One more. One enemy remaining. क्या चिल्ला रहे लोग. Ting. Headshot machine. ये क्या है?
Got it. Come from heaven, proceed. They can come from just leaving. Nice, that was the big. ये क्लिप है, ये देख लो. This is going to be the last clip. अरे दा आप ऑपिंग करा करो टीम लिक्विड के प्लेयर्स भी खेल जाए. 2-0 थर्ड मैप चालू होगा. एक सेकंड देख सकते हो ना तुम लोग. हाँ ये देखो चालू कर रहा हूँ. Nice, that was the B guy. I'm gonna push B. I'm gonna push B. One sewer and one bottom mid. I think it's on top of the box. Guys, can go ropes. Bomb down. I fall back. I fall back. One, two mid. You guys mail room. Minus 120, minus 60. Both low. Are they going back? Yeah, they're going back. I'm pushing. One enemy Last guy remaining. ropes. Spike I'm just down leaving. mid. Just leaving. Recovering it. Concealment. I'm taking B-main. I'm taking B-main and playing. They can come from heaven to CT. Yeah, come from English comms better है bro. इसके लिए करते हैं. हिंदी में बहुत बातें बीते होते हैं. तेरा पीछे एक नई है. English is like point to point. 30 seconds left. And also YB भी है तो उसको भी easy है. ये मैच में राफुल का तबीयत खराब था स्क्रीम में तो हम लोग YB को लेके कर रहे थे स्क्रीम ऐसे ही. Yeah. Pulling them in. Blasting them. Can't plant full है. Spike planted. Got it. घुमा दिया पूरा. बी मेन जाके मार के है. या बस इतना ही. He's got very limited smokes. If you use them all at once, they're gone. Yeah. Even in SEA, though, we don't see Brim often. We rarely see Brim. The Breach is a little more common in SEA, but we rarely see the Brimstone combined with him. So I quite like the kind of selects. English में calls क्योंकि हम लोग वो try कर रहे हैं. English comms is easy. What the Brimstone does mean is हिंदी comms से अच्छा रहता है. Is we're going to be seeing some very fast plays. I doubt we'll see some. ऐसा मैं मानता हूँ. ऐसा सबका नहीं है. Because there is so much utility from either side. If you run down the clock, you're moving. Give more insights on the EXO wala BO5. We started good. We won the first game. Then second game they played. They had us in the first half. We came back. And then also the third map में भी वो लोग ने काफी अच्छा खेला है. But सबसे difficult part रहता है कोई भी FPS के मतलब काउंटर स्ट्राइक हो या कि जितना भी तुम लीड में लो वो easy है. लीड लेना easy है because वो mindset easy रहता है कि but closing the game is very tough because तब तुम जीतने वाले हो तब दिमाग में हाँ ठीक है अभी जीतना है और 2 राउंड तो वो mindset पे आता है. वो mentality पे आता है. जो टीम का अच्छा मेंटालिटी उस दिन रहेगा वही टीम जीत जाएगा. तो आई थिंक वो हम लोग का अच्छा था. हम लोग कंपोज थे पूरे ऑल थ्रू आउट द टूर्नामेंट और मैंने एक टीम को बोला था कि आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स. आई केयर बिकॉज एट फर्स्ट प्लेस हम लोग क्यों खेलते हैं. हम लोग एंजॉय करने के लिए खेलते. तो आई डोंट केयर कि हम लोग 13-0 भी हारे आज अगेंस्ट एक्सो. बट मेक श्योर कि एवरी राउंड हम लोग एंजॉय करें और मजा करें एक दूसरे के साथ मस्ती करें. बट हाँ ऑफ कोर्स वी आर प्लेइंग टूर्नामेंट. वी नीड टू बी सीरियस होके भी वी हैव फन. वो फन एलिमेंट चाहिए था जो कभी कभी सब लोग भूल जाते हैं. इतना कंपटीशन है, इतना कॉम्पिटिटिव सीन है, फैंस देखते रहते हैं, सबका एक्सपेक्टेशन रहता है बट मजा करना ही भूल जाते. तो वो हम लोग का थिंकिंग था तो वो काफी हेल्प हुआ. एनीवे गेम इज लाइव बॉयज. लेट्स गो. South built recently, looking very good. डिश कंट्रोल ले रहे हैं लोग. Action PH definitely want to be joining those annals. All the Sheriff here already. Nats has won the first duel here, and they've been bought low. But Nats can just walk away with Amen that. Lilia. Guyu's going to be forced off the angle here. They might decide to go into Stun. the corner with this frenzy. But remember, the limited magazine on this weapon could make it a little bit of a one-and-done monster.
Damage done from the boombot leaves RU low, and once again it's going to be ये मेरे को अच्छा लग रहा है रे ये ब्रिमस्टोन ये मैप का ये कॉम्प मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है I don't think ये मैप में जेट जरूरी है That might complicate matters. Georgie's coming around the back with the sheriff. This could be everything, Kramer. But that's a Nats OP. Nats makes a fool of them right now. The molly on top of a spike is going to make it even harder to defuse. Medeski needs to be the one to lead the way potentially. Iman, their own wall has been broken down. They're running out of time. The paint shell stand prepared from Guys तुम लोग एक चीज देखे हो यूटिलिटी यूसेज कितना अच्छा कर रहे हैं लोग राइट टैप का आवाज आया ब्रीच ने स्टन किया तो वो टाइम पे इसने नेड नहीं डाला क्योंकि एक गोल अचीव करने के लिए लोग 2 यूटिलिटी नहीं डालते स्टन चला गया उसके बाद कर सकते हैं तो इट्स वेरी गुड यूटिलिटी यूसेज बहुत अच्छा है कभी कभी कोई भी टीम्स क्या कर सकते हैं हाँ टैप किया उसने भी नेट डाल दिया इसने भी स्टन डाल दिया बट मोटो क्या है वो डिफ्यूज ना कर पाए ना तो वो एक चीज पे ही वो कर सकती है इधर नेट डाल दो डिफ्यूज नहीं कर पाया स्टन बाद में डालो या स्टन डाल दो बाद में नेट डालो इट्स अ वेरी गुड थिंग डबल कंट्रोलर डबल सेंटिनल इज गुड मेरे को अच्छा लग रहा है सेज बहुत अच्छा लग रहा है मैप में सेज बहुत ओपन स्पेस क्रिएट कर देता है ब्लॉक कर देता है एज अटैकर आए हाय अनलकी घुस जाओ That's a slight dub, and here we go. It's the Icebox B-Take again, boys. There's the fault line. They're going to be exchanged, though, so Tesseract can't finish that one off themselves. Concussion to move on forward as you present your heads. They'll be taken clean off. The lesser weapons can't do much. And Kush, you were singing his praises, Kramer, and he's by no means done yet. I'll sing his praises until my housemates come and tell me to shut up because like he is really good at the moment, and I like the fact that he's gone for this sage. रिस्क की काम आती है yes. ये मैप में मुझे जेट का उतना इम्पैक्ट नहीं लगता है अदर देन मतलब वो इंडिविजुअल जेट बहुत अच्छा खेलता है वो घुमा सकता है तो वो बात जरूरी है बट वो एज ए एजेंट मुझे लगता है कि दूसरा कोई डुएलिस्ट और ज्यादा हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी If you die, it doesn't matter. Nats could just stick to the sheriff here. Kush is one away from getting his res. Nats one away from the cypher ping. दोनों टीम का सेम ही है एजेंट कॉम बट एक में जेट है एक में रेज है यही देखना है मेरे को जेट कुछ कर नहीं सकता मैप में अदर देन एम और डैश क्योंकि स्पेस क्रिएट करने के लिए उतना कुछ है ही नहीं Lots of ultimate orbs on this. 4 compared to the usual 2. Means that there are a lot of ult points on offer every single round. That can really up the pace of these. Adrian King, we've mostly seen them play on the sky, but both of the skies, of course. Fnatic and Gambit use Raze, Jet नहीं use करते. बात वही है ना ब्रो कि बाकी मैप्स में भी कर सकते हैं जेट के बिना बट इंडिया में पनिश करना आना चाहिए प्लेयर्स को An attempt at aggression here. A good turn away. Kush continues to dominate, baby. And that's already a resurrection. We talked about speedy ultimates and bringing back Del B. Drawing the best use of a res that you have. Hi Cyborg, welcome to the stream, bro. A touch of action here on B. This is really getting ऑफ कोर्स ये मैप में रेज अच्छा है जितने भी चोक मैप्स है ना बॉयज वो सारे चोक मैप्स में रेज बहुत अच्छा है स्प्लिट हो गया बाइंड चोक मैप ही है बड़ा मैप है बट साइट एंटर करने के लिए चोक से ही तुमको एंटर करना पड़ेगा ना हुक्का बी लॉन्ग ए शॉट शावर्स छोटे छोटे जगह से साइट एंटर कर सकते हो फिर साइट लेने के बाद जगह बड़ा हो जाता है तो इसके लिए रेज बहुत अच्छा है I remember this was the buy for Action PH. They already have to save. Adren Breach खेल रहा है full initiator mode but look at Edmund's credits 0 bottom of the barrel. They're going to be building their next buy in a cave with a box of scraps. That's a lovely nade right there. Oh! What an investment there from Delb and an upgrade for their What a flick. They want it, but they're not going to go for the rifle instead. They'll allow Medeski 3-0 इन लोग ने फोर्थ राउंड भी जीत गया मतलब बोनस राउंड Has a little bit of a fist pump there. I agree, bud.
That was a great round by Nats, and from Kush as well. The fact that those SMGs are able to beat the rifles in a fairly ranged duel as well is where you really need to start asking questions if you're Action PH, because this is not turning out to be a pleasant experience for them at T-Bone all. क्या कर रहा है? Action PH, they now go down to their eco. Yes, they've got the Hello, Cypher thing. T-Bone? Yes, the Brimstone also. हाँ जीत गए बे alter ego It's Cypher, the only man available with an ult on alter ego. तेरा prediction जानने आया. Have such superior weaponry. Moving as a pack of 5. The dogs of war. वापस से डिश पुश. A gamble made. ये लोग ए पे ही घुस रहे रे. Brimstone of a breach, but I think it's going to be the सेज का वॉल बना रहे, प्लांट कर रहे और आ रहे And now वापस. smoked off is the breach. Tesseract ये देख. might try and flash their way in here. Down goes the wall, and so down goes for Spike as well. Nothing to stop this, and it might be down to Georgie to try and break this one open once again from the back. It's being well watched by Nats, and it's Ek only a bullet. pistol in the hands of Georgie. It's a lot to ask here, Kramer, but maybe some coherent timing between the Brimstone of a Sage and a Jet here could open things God. up, but no, not against Nats. बाप रे, Edmund manages Nats. to get 2 when it comes to the headshots, but already the damage has been done. The post plant is so well set up. And it's going to be Adrian King who continues to swing 4-0. on forward for sidearm upgrades are given over. Signify YB, welcome to the stream. I don't know if you're the real YB or not. For Action PH, that was a lot of damage for just pistols. 3 kills, and it does kind of strain Alter Ego a little Oops, bit. let's go. But with Guys, the if this spike is the one, real with YB, everything then else welcome to the system, stream, and they're also not going to worry too much. भाई को They mod have दे the दूंगा. cash, I'll they give you the have mod. money. The orbital strike's available for RU. The ping's available for Modesky. Pugs. मैं इतना नहीं खेलता Pugs रे. Ego Delby, he is But 2 ठीक away है. from that showstopper, as is Aiden King. Is that enough? Double initiated is, I don't think कि ये map में उतना जरूरी है. The dynamics change. एक initiator जो कि breach है, जो कि बहुत important है. Julio here up against Iman. Already a wall being used here. And that might signal that A site might be a touch weaker, but it is stacked up and Georgie is there. So it's kind of a Sophie's choice right now for Alter Ego. Do we deal with the op? Real YB हो गया. Let's go. Welcome to the stream, YB. Looks like we want to deal with the wall here. Oh, Modesky going down. That's bad news. They were hoping to get some real info off the back of those wires and use the cyber cages to stay alive for a touch longer. Tesseract smoked off for now. What a wall. Push. They are doing everything. What an insane wall. Georgie's arrived with the op. If they see someone up high, they'll be able to execute them in short order. Still no plant. Just Oh. Georgie, but there's no misses from Kush. The only misses will be the honeys that go. Oh. Oh my God. Kush, bro. Ofi. Still my beating heart. I hyped him up on a sense. I didn't realize he was going to do it again. Can you change name this? Oh yes. This is real YB. Yes, YB, you can change your name. I'll show you. Crikey doesn't even come close, Harry. This kill onto Georgie as well. How in the name of all that is holy does he win that engagement? And then for RU as well. Look at that adjustment. Amazing Kush stuff bhai from OP. Del. And Kush. 10 and 2. It's like, you know what? Calm down, boys. You had yourself a good couple of games. Yeah, Adele, just It's my back turn. off, man. It's my turn. Yeah. Julio. Right here. Oh, look at this. Everyone going into the underground. At least 3 people. Gonna settle down here. Kush is on the other side. Nice. Oh, that's 1. Oh, Kush. Leave them 2. be. They're just little baby boys. They're just children, Kush. Think of the children. खुश भैया खुश हो गए. For my vandal. कुश का गेम देख के हम खुश हो गए. No slouch when it comes to the aim. They can take the ओहो बंडू भाई welcome to the stream. All good बंडू भाई, क्या हाल है? Oh, Georgie. The knives are out, sure, but is it Welcome enough मेरे for भाई. 1v4? Have one. Particularly against Kush, he's on the other side of this wall. Alright, public He enemy sees the number first. 1. The wall won't be an issue at least as well. They still have the updraft to try and move forward. Is there any point in saving here? They check their flank for now.
And here comes the entry. Here Already comes one the has been entry. given over the fault Stun. line as well. Swapping over to the knives to attempt to avoid this. I think 3-0. And Georgie But let have to make their देखना move पड़ेगा sooner कि rather अटैक than कैसा later. है इनका. They go up top, they couldn't Action find PH का any way, attack. and that means they no longer have any way over Oh! the ball. However, Georgie continues to hit the headshots. Delb and Kush are gone, and now they can try and isolate themselves a couple of 1v1s. Unlucky. Nice try. Nice It's a bit try. of barrel stuffing from Adrian King, but hey, it gets the job done. Alterigo 6-0. Hey, this has been a very quick game. Haiwan and Anti's I room really always like it. smelled Try like out smoke the in ball now Optibo from Action because PH. This is slipping we away used from to, them and quickly. like, we are Kush, he is playing religious out people and we used to as well. use Even though he doesn't get धूप the kill धूप. onto Georgie, it doesn't क्या matter. बोलते हैं इंग्लिश He's में got इन everyone इन else leading इन up to सन it. क्या बोल That and Aiden King both having गरम some पानी नहीं incredible धूप डालते थे performances we are now. like There's that we used to time and worship balance for Action PH, which I'm glad yes they are listening नहीं to. मच्छर का नहीं we used to worship No, I'm गणपति glad they're going for it. we used to because- use that धूप Yeah, exactly. that That's is what why happens with Kush. always smoke they need to, because if they're unable to be able to close out this momentum, when they hit their own attacking क्या बोलते हैं side, इसको it इंसेंस won't स्टिक क्या matter क्या बोलते हैं because इंसेंस they've taken कुछ तो such बोलते a हैं मैं pummeling भूल गया lead बचपन up to में this, and they've got no इंसेंस choice ना but to either back इंसेंस off, hide, or find a way to isolate 1v1s. You can't do that on the fly. You need a timeout to be able to figure out what needs to change. वाईबी भाई कपड़ा फाड़ रहे हैं इधर आके From the players of Action PH, less so from the इंसेंडियरी coaches, है but नहीं you know, इंसेंस स्टिक्स हाँ सही बोला मैंने to allow these I was right players to continue on the same momentum they've already generated. They don't need to really address things at the moment. They don't need to change the dynamic that's got them to 6-0. As we head in. yeah also yes Haiwan is right we used to grill chicken and all so उसका भी smokes थे chicken grill From Action PH as well. paneer They have grill 4 mushroom grill They have no money, smoky but they have mushrooms, so many everything. else. That could be their turnaround. We saw it on Ascent. Yes, That of massive course. ult was what gave them a round, which was the foundation of a bit of a comeback. Why There's we? a single orbital strike and a res. That res we've seen has been used very effectively in the past. muted hit The Discord problem में हाँ was because Delphi I'm went on to get 2 talking extra to you kills. guys now Action PH though, can they make sure? oh हाँ yes by the way our room was the chilling place for everyone like any outsiders coming they always you know always used to visit our room they chill there was a cool balcony where Haiwan used to go and see things which he loves. We had 2 chairs. We used to relax like this. just sits within the camera for now. Alt मारा रे. Here is going to be obvious. Up comes the wall. Oh, what a roop! Roop कर दिया. Rap roops. And there's the orbital strike that might actually take out Kush. Hi Allah. Though, with the covering fire works well. An attempt to try and stop this from Action PH, but you can't. हाँ भाई शेफ तो अरे भाई शेफ का क्या है उसमें शेफ थोड़ी बनाएगा क्या शेफ बनाएगा खाना हम लोग के अपने मौज के लिए हम खुद बनाते थे पार्टी पिकनिक जैसा I love that Rolling Thunder. That is one of the best defensive Rolling Thunders I've seen in a while, and honestly, it's just off the back of some supreme use. Crazy guy को जानते हो? Yes, yes. YB's best friend. Juliolio's one away from his orbital strike, and with Nats as well, one away from his ping. Tap, That was Action toop, PH's chance toop, to turn it around. toop. Hasn't happened. चल रहा है Now ऊपर. Ego hit their power spike with the rest still available, with the show. And I was always happy that he did our morning workout. Tesseract is there to pick up the. भाई मेरे पास I have so many videos of Haiwan doing the workout and I like pre-workout, post-workout. This has to be it, right? You need to get your wins here. Got one. Anything more in the tank, you bet that there is. Yeah, one more. What do they have to say about this planting? It's a shouting match, a debate between this pair. This was supposed to be it for Action PH. They could turn it around from here, but now they're forced into the post plant. The smoke is refreshed. My God, Adrian. 1 versus 2. Iman, the hero. You're muted on Discord. Yes, yes, because I don't want to disturb T-Bone. I'm talking with you now. They can just leave now. They could play the post plant with their orbital strike if they wanted to, and just deny Action PH around. Eman needs to weigh up their options here. T-Bone one-sided हो रहा है भाई. Friendly stun, a critical misplay there. T-Bone. So well. Oh, Adrian King though. T-Bone भी गायब है. Clutch. Clutch? हाय मैं मिस कर लिया रे. शी रे मैंने मिस किया. They killed their teammate. Yeah, that. However,
if that's all there is when it comes to Alter Ego kind of misplays, I think that's going to be pretty happy with that. Yeah, if that's it. Yeah, if that's it. Bear in mind, they've got 4 ults to throw this next round. Tesseract's one away from his Rolling Thunder, and that may be able to level the playing field for Action PH, but they still need to overcome the fact that both Nats, Adrian King, and Kush are all playing down well. Delver's had a quiet game, but let's be honest, he hasn't had to do much. Heaven after 2 minutes into workout lying on the floor already. Bhai, YB is leaking. They'll just shrug it off. Badnam, oh my god. Not quite so much being alone. भाई एक स्टोरी है इन काउंटर स्ट्राइक you can change your name, right? अभी वैलो में क्या है, like if you change your name you cannot change it back for like 1 month I think, but in counter strike you like तुम कर सकते थे वो. So we were screaming a team I think, and YB used to know us by our nick only, so I changed my nick to Munni Badnam या Munda Badnam, something like that. Wait. ये round देखने दो. Kush moves on in alongside Nat Oh. while they play on top of the wall. There was no idea that they would be there. Kush gets yet another res. And now it's 1 versus 3. आवाज आ रहा है? Iman again. रुक जा. हाँ आ रहा है bro. अबे मेरा कुछ हो गया था बे. अभी ठीक हो गया. मैं कब से बात कर रहा हूँ? ये one sided हो रहा है रे. Could be prepared. Oh yes it is. An attempt for a direct stun. चड्डी खोलो. No! Iman, surely you don't hit that headshot. It's down to a 1 versus 1. Playing the tightest angle that No, nice try. हाँ तो फिर हम लोग का सुनना अभी तो हम लोग खेल रहे थे तो मैं नाम लगा आ रहा है. However, the All fact good. that it goes into the 3-on-1, he has the chance to. He has complete faith that it's. अरे कुछ Look at this here. इसका बैटरी कम हुआ. Just W key his way into the opposing हाँ stage. तो मैंने नाम रखा मुंडा बदनाम. ठीक है मुंडा बदनाम मुंडा बदनाम. So me and YB are alive and YB it was in front अबे of मेरा कब से वो था फुस्ट टॉक में था लॉल. नहीं थे लोग. Disadvantage. They still are 8-1 down. हाँ इसके लिए पूछ रहा था. बार. रुक जा आया. Oh god, Nats bro. और फिर इन्फर्नो का मैप था, हम दोनों रिटेक करने आए थे. Me and YB were retaking and I was with the op and YB मेरा नाम देखा है. YB is like I was not diffusing. YB called can you please diffuse, I am marking. I was not diffusing, I fake diffused and I was marking the CT. YB ऐसा कर रहा है. Hey बदनाम. मैं आज से ना इसमें सेज खेलने वाला हूँ. हो गया मेरा. सेज बेस्ट है रे. हाँ ना. हाँ. भाई ब्रिम मेटा तो है. Yes. एक सेकंड आया टीम रुक. तो फिर YB बोल रहा है YB बोल रहा है कि बदनाम. हे बदनाम डिफ्यूज बदनाम. और मैं क्लिक ही नहीं हो रहा है मेरे दिमाग में कि my name is बदनाम and I had to diffuse. राउंड हार गए गेम. YB full blank, गुस्सा full एकदम tilt. YB is like after the game ऐसे देखते हैं मेरे को. Never ever change your nick again. और मैं ओके सॉरी. इंसेन. हैवान हिंदी गाने गाता था, गाली पड़ती थी इसको. और हैवान फुल खुन्नस में हिंदी मेरी माँ है. Oh. It takes them a while to identify Iman, but once they identify, they take the shot and they take it well. Are you in a 1 versus 2 to try and deny Alter Ego over double digits, but it simply cannot be done. Alter Ego are the champions. And Action PH might be regretting their decision to defend first. Yeah, here's the thing. It doesn't matter what side you start on. Like, they're just being outclassed when it comes to ability usage here. And the confidence Yes, Evan. push through smoke, Fepco get meet up. timing. The fact that they're able to play these confident plays and still get kills Ah. is really where we're seeing the true strain on Action PH. They're 10-1 down. The final round of this first half. They just one round.
would give them that extra bit of confidence. We've heard of the 10-2 curse, but the 11-1 curse, just ain't a thing. भाई हम लोग का जितना जो सीन था ना बुट कैंप में इंसेन भाई हैवान का एक फ्रेंड था रे जो बंदा काम करने आता था वो इतना सीरियस बंदा था ना बैंगलोर में बूट कैंप था दैट गाय वाज सो सीरियस वो ऐसे ऑलवेज काम करता था और ऐसे लुक देता सबको मतलब फुल सीरियस मेरे को मालूम नहीं हैवान कैसे दोस्ती कर लिया हैवान के साथ वो लेकिन बात करता था किसी के साथ करे या ना करे to go huge, but he simply can't connect the shots just yet. They need to be careful not to die to the pain shells, but it's Kush who delivers the headshot in the end. In comes ये जल रहा है I believe as well as a slow orb. Medeski is doing their best with the bulldog. It's not the ideal weapon, but it's the one that they've got. The post-plant setup is as clean as it always has been as Eman begins to stare down this area. Yet गया but cannot defuse Molotov हो गया cannot defuse who has the Vandal in hand and plenty to work with. The molly will begin to fade, but up against Kush and Nats it's a tough 2v2. A tap on the spike, two players parading down the air. क्या बोलता है रे अब सब चेंज हो गया अभी एंटी खाली पैसे के पीछे भागता है भाई क्या बोलता है भाई पैसा कमाना जरूरी है रे We may finally be seeing a just saying today 24 December DreamHack 2018 date yeah bro every time we see that glimmer of life though having dinner take care YB because while Alter Ego 6 बजे डिनर कर रहा है बंदा समझ गए हो सेहत के लिए बापू हानिकारक है वो वाला गाना देख लेना तुम लोग वैसे ही ये हम लोग के लिए हानिकारक है on a grand final as well हाँ तानिश भाई तू मेरा दोस्त है मैं पैसे के पीछे तो हैवन तू सब्स के पीछे It's destiny calling. And Alter Ego, they are feeling so powerful right now. Match point, tournament point, and already double digits. हिंदी मेरी माँ है कोई मेरे माँ को कुछ बोलेगा तो मैं काट डालूंगा एक बंदे का डायलॉग था रे मतलब on a lighter note not serious मस्ती करते थे हम लोग नेट डाल आई They just move ahead. They try to deny the paint shells, but LB denies the breathing. Next up, gets a nice little tap into a right click. उधर रुक के मारा रे 2 versus 2, but already this site is going to be populated. Good position, Nats. And by their compatriot on the Brimstone, this is by no means comfortable. For Action PH is the wall available. Unluko maluko. Considered. No. डर गया वो अपने छाती को ऐसे ऐसे कर रहे हैं नेट्स ले क्या हो गया मेरे साथ खलीबली हो गया है दिल सारे आर्मी गाइस तुम लोग अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो सही बोला ना हैवान या उल्टा बोलना था भाभी को मॉड बना दो बात सही है just to make sure that they're able to take each 1v1 as it comes. Nats and Kush having an immortal game right now, and with Action PH now up Signify YB Alter Ego, they're going to press the इसके दिल से अभी तक Signify निकला नहीं थ्रो कर लो फ्रेंड्स He does just that. भाई तो and Nats is slaughtering them as they come on. One way. Defensively, Alter Ego are simply different. The siren call of $10,000 GG and our championship prize. GG Alter Ego 3-0 हम लोग चैंपियन से हारे हैं डोंट वरी ग्लोबल से भी हारे वो बात अलग है बट टूर्नामेंट चैंपियंस Alter Ego है उनसे हम लोग हारे अपर ब्रैकेट में Pushes RU forward. He's slowed, he's smoked, he's tapped again and again. Everyone up on top of this wall. Will they be aiming upwards? They wait for the smoke to deflume. ये क्या किया इसने बॉम्ब आगे दे दिया cool player Collectively teabag. They are on the edge. They are teetering. According to you, who is the best race of India? I think there are a lot of good races. Excali, Hikka. For Alter Ego, Action PH, sure, they're going to go into this with a इन दोनों का ही नाम आता है. Now Eskerosi is also playing good. Advantage enough to convert almost 10 rounds in a row. 10 rounds on the bounce to keep the Filipino team in both this tournament and more importantly
in this series. With Alter Ego, yes, they play bonus. Yes, it's a greedy bonus. They T-Bone हो गया. with Spectres around the board. ना Game. full team diff bे. Team diff, individual. Team diff, sub diff. This is all aim all the time. हंस रहा है अभी उनका Brimstone. बोला सेकंड प्लेस ले लो और खुश रहो. भाई ये क्या वाला है? उन लोगों ने इधर आके वॉल डाला. हाँ. भाई ये तो एग्रेसिव कंट्रोल. भाई उनका केकरे की तरह देखना साइफर कैसे कूदने के लिए रेडी है. भाई ऐसे टीम के लिए $10K सब बहुत बड़ी चीज है क्या? टूर्नामेंट रेस. हाँ रहेगा ही. प्लस उन लोग नहीं जीतते ना बिकॉज ऐसे के टियर 1 टूर्नामेंट्स में पेपर एक्स वगैरह आ जाते हैं. तो उनको भी जीतना रहेगा तो आ जाते हैं. खुश भाई खुश हो गए. That's why full मौज आज. अरे हैंडशेक तो करो यारो. हैंडशेक तो करो. बिस्तर भी नहीं बनाया रे बंदे ने. 3-0 बे. With Action PH, an almost soul-crushing performance from the Filipino side to go to overtime on Ascent, GG. to move to the dark horse of Fracture. We knew चलो टिबुन भाई. चलो हो गया. हो गया. थोड़ा बात करके बंद कर दूंगा. ठीक है. बाय बाय. किधर है टिबुन अभी? मैं बैंगलोर. अच्छा. ठीक है. चलो बाय बाय. Bye bye. The Indonesian teams have taken it, Kramer. Moving into 2022, your champions are Alter Ego Indonesia. A bunch of smiles and a bunch of prestige. Good. Well played. Fracture. I cannot emphasize that enough because I tell you what, Harry, when it comes to aim, when it comes to reactionary plays, when it comes to their utility usage, these guys know what's Nats, what a performance from them, and what Adrent of course है. सब लोग अच्छा खेले रे. Good play. 3-0. They take these grand finals. 3-0. Can't believe how dominant that last map was. They all looked so interesting, but then when we made it to Fracture, evidently the Red Bull that you can scan down below to get a free one was running through the veins. Leg day. तेरा ऐसा नाम क्यों है? तेरे को जिम में लेग डे करना पसंद है क्या? एक बंदा बोलता है क्विक सिल्वर और दूसरा वुल्वरिन. कास्टर्स. I didn't expect them to be the gunplay master. They slaughtered Vandals there in that final round with a Spectre. It seemed like no matter what was in the hands of Alter Ego, it simply shot differently. Why doesn't my Spectre do that when I'm faced with a full bar? And Maluko. VLT Light, 7-man lineup. I'm actually very happy it's Kush the one to do really well on this map as well because he played out of his Watch VLT LF best Astra in India. I agree. Such बात है. He gets MVP for this map as well. I think he's kind of well earned it for himself. And for me, that 7-man अच्छा है ना. जितना बेंच स्ट्रेंथ रहेगा उतना एक टीम के लिए अच्छा है बिकॉज अभी का ई-स्पोर्ट्स सीन बहुत अलग हो चुका है. अभी सीन है कि कितने टूर्नामेंट्स खेलते हैं हम लोग. लाइक इट्स स्लोली फुटबॉल क्रिकेट की तरह बन रहा है कि जिनका बेंच फुटबॉल मेनली जिनका बेंच अच्छा रहेगा वही टीम को एक बहुत ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि हर प्लेयर को एवरी टूर्नामेंट एवरी मैच नहीं खेलना रहेगा. उनको भी ब्रेक मिलेगा फुटबॉल में जैसा होता है. क्योंकि अभी वैलोरेंट में एक महीने में 2-3 टूर्नामेंट्स आ जाते हैं कभी-कभी. तो एज अ प्लेयर इट्स वेरी हेक्टिक. तो तुम्हारे पास अगर ऑप्शन है कि तुम्हारे बेंच पे प्लेयर्स है जो अच्छे हैं तो आराम से वो लोग आके खेल सकते हैं अगर वैसा एटमॉस्फेयर बनता है टीम में. नो स्टोरीज भाई. आज के लिए इतना ही. बंद कर रहा हूँ स्ट्रीम. बहुत भूख लगा है रे. कुछ खाया नहीं. You're absolutely right. So I want to highlight as well, particularly with those narrow corridors. Well fluid. Also so important. And we saw इंटरमिशन पे जाओ, ये बंद करो, गाना लगाओ. Let's go. मेरा फेवरेट गाना लगाता हूँ मेरे भाई का इस साइड फ्लो. चैट का वो डालना पड़ेगा इधर. हाँ वो थोड़ा बाकी था काम. चैट डिसेबल दिखा रहा है. इस साइड फ्लो मला सिक वाइब ब्रो. फुटबॉल से याद है एथलेटिको वर्सेस रोनाल्डो
याद है ना? On your face, bro. Atletico. Diego Simuan. स्ट्रीम करूंगा भाई, स्ट्रीम करूंगा. ऑलराइट भाई, क्रिसमस का पहले ये स्ट्रीम था तो वुड लाइक टू विश एवरीवन मेरी क्रिसमस, हैव फन, पॉजिटिविटी फैलाओ, एंजॉय करो क्रिसमस फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ. और इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना. इंस्टाग्राम में फॉलो करो और पिक्चर्स भेजो क्या क्या कर रहे हो तुम क्रिसमस में. मजा, हम लोग भी शायद से कल साथ में कुछ करेंगे मजे. एंड अगर न्यू ईयर के पहले स्ट्रीम नहीं कर पाए तो एडवांस हैप्पी न्यू ईयर सबको. अच्छे से रहो, घर वालों को प्यार दो, पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर, और जो तुम लोग जिनसे मिलते हो उनके साथ भी. एनीवे, बाय बाय गाइस, बहुत मजा आया वॉच पार्टी करके. थैंक यू सो मच टेक फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी. आज के लिए इतना है. जेट्रिक्स, के सीडी, चलो बाय बाय गाइस, गुड बाय, सी यू. लिख देता सच चाहे तुझे ना पसंद मेरी कलम को नहीं मालूम होते व्यूज क्या. जिस रास्ते पे चला वहाँ छाप छोड़ी मैंने, हर मोड़ जाने साइज मेरे शूज का. स्किल्स किए फाइन तभी आज करे शाइन, वैसे वैक तो ना तभी जब मैं न्यू था. पहले दोस्त थे अब जान देते दूसरे पे, राइट टिल वी डाई मेरा क्रू. हाँ, ये बंगाल से है रैपर तभी फ्लेक्स करे 100%. गिराना चाहते बहुत बता कौन सका, ये आते जाते लोग देते बहुत दगा. इनके धोखे पे भरोसा हमने बहुत रखा. हाथ में जा मैं शोज में जा, मैं गानों में जान, बहानों को थाम के चले तलाश में, होशो हवास में घटाते फासले, कठिन ये रास्ते आगे तक क्लास में, अभी आगे हूँ बार्स में. तेरी बातचीत ठीक तो तेरा भी नाम, यहाँ प्लास्टिक बिक रे सोने के दाम. जीत हार बेफिक रोके ना काम, क्योंकि कला का ना लग सके अब भी दाम. जे ट्रिक्स मेरा नाम याद रख, काम कर ज्यादा और बात जाम रख. नफरत हटा दो तो कामयाब सब, और सच को अपना लो तो जानकार सब. भाई तेरा लेके आया ईस्ट साइड फ्लो.